How many of us know me? कितने लोग को पता है? Great. I think we met in the seminar. आपको लगता था कि मैं पढ़ाता भी हूं? कैसे? अच्छा, great. So let's see what have you done till now. कहाँ तक हो गया फिजिक्स में? वहां तक हो गया. ग्रेट. तो हो जाए कुछ बातचीत. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट वी से. चलिए, लेट्स डिफाइन मोशन. I'll give you 4 options, but this exam is all about options. Life does not give us options, but this exam definitely gives an option. I give you 4 options. Motion is distance, displacement, velocity, acceleration. It's acceleration. Okay, great. Or all of you say it's acceleration? It's displacement. Okay. अच्छा, ये जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने जवाब दिया, आपने कहीं पढ़ा है या दिस इज योर ओन थॉट? डिस्प्लेसमेंट भी आपने बोला. आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला. आपने बोला मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन. वेलोसिटी ने कोई पाप किया है? पाप किया वेलोसिटी ने? ये कह रही है हाँ किया है. क्या पाप किया वेलोसिटी ने? मतलब आपने बिल्कुल हटा दिया एक चीज को. बाय द वे, व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन इन फिजिक्स, यू थिंक योर्स, आप उसको अपने आप सोचते हो या जो लॉज प्रिस्क्राइब्ड हैं उनकी मदद से आप उसको डिस्कस करते हो या सोचते हो? लॉज. न्यूटन का लॉ है तो ये तो मालूम होना चाहिए. सो गर्ल्स, मोशन, when people ask Newton, sir, when you defined Newton's laws, when you said these are your laws of motion, what exactly do you mean by motion? And he said velocity. So motion is velocity. Now you'd say, sir, कमाल है, वो velocity तो तभी होगी ना जब displacement होगा. और अगर कोई बॉडी के पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है. हाँ भाई, बात भी सही है. फिर फोर्स ने क्या पाप किया? तो फिर तो फोर्स भी हो सकती है. अरे यार, जब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क डन भी तो हो सकता है. फिर तो एनर्जी भी हो सकती है. तो पूरा खानदान ही हो सकता है. पूरी the entire physics is based on this concept. But law says that when we discuss Newton's laws of motion, motion primarily means velocity. अब आप कहोगे सर, हम आपकी बात क्यों माने? हम तो नहीं मानेंगे. बात भी ठीक है, क्यों मानोगे आप? तो क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछते हैं. I'll draw a graph. This is x-axis and this is y-axis. I'm drawing a straight line. My question is it a 1D or a 2D motion? सबका आंसर है क्या है जी? जोर से बोलो. 2-dimensional motion. पक्का? गलत जवाब. आज हम यही देखेंगे. I've been teaching physics for almost like 17 years. और 17 साल में मैंने एक ही चीज नोटिस करी है. 17 साल पहले और आज जो गलतियां बच्चे 17 साल पहले करते थे, कमाल की बात यह है कि गलतियां वो आज भी हो रही हैं. मतलब ये क्लासिक एग्जांपल है लाइफ में कि इन माय फर्स्ट क्लास आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर 17 years व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन अगेन, मतलब जब आप पैदा भी हुए होंगे टाइप्स वाली बात है, नहीं हुए थे, तो देखिए आपके जीवन में आने से पहले भी जानकारी जनता को यही थी. तो कुछ बदलाव नहीं है. There's absolutely no change. You say it's a 2-dimensional motion और आपका लॉजिक भी अपनी जगह सही है. सर, 2 डायमेंशन, 2 एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं. तो वो लड़की कह रही है नहीं, वो मुंडी ला रही है. नहीं 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 नहीं. अरे क्या का मतलब क्या है? एक्स एक्स है, वाई वाई हो, क्या हो सकता है? अरे मतलब महाराज, अरे लड़की आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम?
यशिका बोलती है सर आपने तो बताया नहीं एक्स और वाई क्या है। चलिए मैं लिख देता हूं, यशिका ने डांट दिया। यशिका ले, ठीक है, एक्स और वाई दोनों डायमेंशंस हैं, लेंथ है। अब यशिका बता, अब क्या है, 1D 2D? 2D, आप कह रहे हो 2D। चलिए मैं आपको बताता हूं उसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट्स अ 1D मोशन। वैसे ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए आपसे एक और बात पूछता हूं, आपने कहीं पढ़ा है दैट ऑल स्ट्रेट लाइन मोशंस आर वन डायमेंशनल मोशन? पढ़ा है आपने कहीं? ये तो पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ये कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन है या नॉन स्ट्रेट लाइन है? सर ये क्या बात हुई, आप ही हमारे मुंह में डाल रहे हो शब्द। आपने कहा आपने पढ़ा होगा, हमने कहा हाँ पढ़ा होगा। अब ये कैसे कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में कुछ? मतलब क्वेश्चन ही आप ऐसा पूछ रहे हो जिसमें हम ये कहेंगे हाँ 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 बिल्कुल सर बिल्कुल 100%। तो भाई ये क्या बात हुई? क्योंकि बुक्स में लिखा है ऑल स्ट्रेट लाइन मोशंस आर वन डायमेंशनल मोशन, इसलिए 1D है। मजा नहीं आ रहा। चलिए थोड़ा सा मजा लाते हैं। मैंने बोला कि मोशन इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी इज वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। लिखो कुछ मत। आई जनरली प्रेफर स्टूडेंट्स नॉट राइटिंग थिंग्स। राइटिंग से बेटर है रजिस्टरिंग थिंग्स, रजिस्टरिंग इनसाइड द माइंड। आपने लिख लिया तो ये तो रद्दी बन गया, बेकार हो गया। और अगर ऐसा ही होता तो इतनी बुक्स, इतनी वीडियोस, इतना सब कुछ अवेलेबल है, लोग पढ़ के विद्वान हो जाते। पढ़ा तो आपने भी था। आज से पढ़ेंगे नहीं, आज से सोचेंगे, आज से थिंक करना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग। तो कॉपीज बंद और दिमाग, कसम खा, देखो ये बात तुमने मान ली मेरी, ये बात सबने मान ली। मैंने कहा बुक्स बंद, हाँ सर बंद ही कर दी हमने। ये आपने अच्छी बात कही, बड़े कमाल की बात है। ठीक है, velocity. I said motion is velocity. That means 1D motion means one dimensional velocity. पक्का? One dimensional velocity, पहले मैंने कहा 1D motion, मोशन हटाया, ऐड किया velocity. अब क्या हो गया, वन डायमेंशनल वेलोसिटी। अब डायमेंशन वर्ड को भी रिप्लेस करते हैं एक नए नाम से, डायरेक्शनल। अब बोलते हैं वन डायरेक्शनल वेलोसिटी। सो 1D मोशन इज वन डायरेक्शनल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता करते हैं? जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मैं आपसे पूछूं यार प्लीज बताओ ना, यहां पर ये पार्टिकल का ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं होगा, टैंजेंट ड्रॉ कर दो आप। बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट ऑन दैट, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैजेक्टरी। By drawing a tangent on a trajectory, we get the direction of velocity. That means by drawing a tangent on a path, what do we get? ये क्या है? Path. If I draw a tangent here, this gives me the direction of velocity. If I draw a tangent again, this also gives me the direction of, ये सारे arrow एक ही line में या दो lines में? All the arrows point in one direction. So this becomes one directional velocity, या फिर one dimensional velocity, या फिर one dimensional motion. यहां से शुरुआत करते हैं जीवन की। अब लिखिए, now is the right time to write. ठीक, in this exam it is not how much you know, the point is how much correctly you know things. Concept से important है misconceptions. आप जितना मिसकंसेप्शंस का बोझा कम करेंगे लाइफ अपने ऊपर। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा सर कितना पढ़ना पड़ता है, एक किसी क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं? 1000, 2000, 10 किताबें, 15 किताबें। ना मैंने कभी पढ़ी ना मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, सोचने से पंडित बनता है। तो जो भी स्टेटमेंट आप बोलें उसको समझ के बोलें, समझ के लिखें। क्लियर? सो आर वी क्लियर नाउ? So then can I say that a straight line motion is a one dimensional motion? Can I say that? Yes. Why? Because ये है सत्य पर आधारित पहली घटना। अब चलते हैं सत्य पर आधारित दूसरी घटना के पास।
Great. Have you studied constraint equations? Newton's laws of motion को करने से पहले we should know constraints. नाम सुना आपने इस वर्ड का? क्या मतलब होता है constraint का? जो नहीं हो सकता. Suppose I say people outside have a, और जो नॉर्मल लोग हैं वो सीबीएसई ऑफिस पे नहीं आ सकते, तो आप ये उनके लिए बोलेंगे, उन लोगों को बोल सकते हैं यू हैव अ कंस्ट्रेंट दैट यू कैन नॉट कम टू द सीबीएसई ऑफिस. सो कंस्ट्रेंट इज रिवर्स ऑफ मोशन. मोशन में आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट में आप क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आप नहीं कर सकते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप सब कुछ कर सकते हो. हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई तू ना इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता, अब अगर मैं ऐसे जाना शुरू करूं तो मेरा एक कंपोनेंट यहां भी चल रहा है साथ साथ. इफ आई हैव टू एंश्योर कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू इट. सो व्हेन आई मूव परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, दिस बिकम्स माय डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस बिकम्स माय डायरेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट. इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन. ठीक है? Like for example, to start up, I'll take a very small question. पुलिस की है ना आपने? पुलिस करी है ना? बस मैं नहीं चाहता कि आप इससे ज्यादा ये कुछ पुलिस हैं जिनके साथ कुछ मासेस हैंग कर रहे हैं. आपको बस इतना बताना, यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हाट इज द रिलेशन between the accelerations of m1, m2 and m3. Find the relation between the accelerations of m1, m2, m3. एक काम करते हैं, let's take this as a1, let's take this as a2 and let's take this as a3. So find the relation between a1, a2 and a3. That's the question. हो गया? अच्छा अभी तो पुली बना रहे हो, बनाई भी तो आपने बहुत कम है ना सर. इंटरेस्टिंग. नाम क्या आपका? आपने पहले किया है इस तरह का क्वेश्चन? कहाँ पर? गुड, वेरी गुड.
चलिए, लेट्स थिंक अबाउट इट. टेल मी वन थिंग, इस सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर नेट टेंशन कितना होगा? 0. व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स, एक चीज याद आई, पहले आपसे वो ही पूछ लूं एक बार. इट्स अ प्लेन सरफेस. क्या ये? I've kept a mass m on the surface. mg is a force which is acting here. If I call this action, what is the reaction to this force? Normal reaction. Upwards, pakka? Do we all agree? Normal reaction is the reaction to mg. Yes or no? Confident? गलत. अब आपको सर हर चीज गलत. अच्छा, एक काम करते हैं. What is Newton's third law? And second part क्या है statement का? And the action and the reaction act on different bodies. ये वॉल है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूं. एक्शन कहां पर है? वॉल पर. मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? So the action, if it is on the wall, the reaction is on my hand. So action and reaction have to be on two different bodies. So if mg is on body, then the reaction cannot be on the same body. कहां है reaction इसका? सरफेस पे. गुड. नाम? प्रज्ञा कहती हैं सर ये रहा सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन. पक्का? तो फिर ये क्या है? अगर इसका रिएक्शन ये है तो फिर ये एन क्या है? ये किसका रिएक्शन है? ये मास पर है रिएक्शन. तो मास, ये रिएक्शन कौन लगा रहा है? ये एन कौन लगा रहा है? तो फिर सरफेस पे क्या होना? अगर ये रिएक्शन है जो कि सरफेस मास पे लगा रही है, तो इसका एक्शन सरफेस पे लगना चाहिए जो मास लगा रही है. हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है. दिस बॉडी इज प्रेसिंग दिस सरफेस. ये पेन इस सरफेस को प्रेस कर रहा है. ये एन है. ये सरफेस इस पेन के ऊपर एक ऊपर फोर्स लगाएगी, वो भी एन है. ये अगर एक्शन तो ये इसका. सो एक एन एक्शन, दूसरा एन. तो फिर एमजी का रिएक्शन कहां है? मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो क्लास 8th में आपको मालूम होना चाहिए था पूछा है. And you know the worst thing is, you know the worst problem is, the answer to this question is not written in any of the books. ना तो टीचर बताते, ना ये किताब में है, और इसके बगैर आप आगे पढ़ कैसे सकते हो ये भगवान जाने. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? कभी गया दिमाग आपका, या आपने एक गलत चीज को ही सत्य मानकर उस पर आधारित करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा दिया? इंजीनियर्स थिंक डिफरेंटली. एक इंजीनियर की सोच एक आम आदमी से अलग क्यों होती है? क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है. ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? चलिए इसका आंसर बताया जाए आपको. आई डोंट नो. दिस mg इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू ग्रेविटी. mg में जब g है तो ग्रेविटी के अलावा तो कुछ है ही नहीं. और सत्य बताऊं आपको? तैयार हो? ऑल सेट? घबरा तो नहीं रहे? ऐसा तो लग रहा है सर अब तक जो पढ़ा था वो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है? जब तक ये लगता रहे तब तक जिंदगी ठीक चल रही है. जब तक ये लगता रहे कि कुछ और भी बाकी है, कुछ और हो सकता है, लाइफ इज फाइन. जब ये लगे सब कुछ हो गया तो उसका मतलब ऊपर जाने का समय आ चुका है. एंड आई एम श्योर हमारा ऊपर जाने का समय अभी नहीं आया है. सत्य करें इसको. ये है क्या? ये सरफेस किसकी बनाई है मैंने?
अर्थ की, किसकी? चलिए इसको गोल कर देते हैं। ये mg फोर्स m पर लगा कौन रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ। कौन लगा रहा है? सब लोग दोबारा बोलेंगे। m पर जो नेट फोर्स mg लग रही है, ये लगा कौन, लग किस पे रही है? मास पर। वेयर इज इट एप्लीकेबल? ऑन द मास। एंड हु इज अप्लाइंग इट? द सेंटर ऑफ द अर्थ। रिएक्शन कहां पर होगा? खत्म। ये रहा एक्शन, ये रहा इसका, ये रहा इसका एक्शन, और ये रहा इसका। नोट करिए। आई क्लियर हुई बात या नहीं हुई? इफ somebody says this, अब देखो ना, ये पेन है, इस पेन को मैं मिड एयर छोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं? आई रिलीज इट मिड एयर। फोर्स कितनी लग रही है? मास अगर इसका एम है तो कितनी फोर्स लग रही है? कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ का मतलब अर्थ का सेंटर। तो एक्शन कौन लगा रहा है? अर्थ। किस पर? पेन पर। तो रिएक्शन किस पर लगेगा? अर्थ पर। अर्थ पर कौन लगाएगा? पेन। सिंपल। रिएक्शन, ये उसका रिएक्शन। अब अगर मिड एयर की जगह इफ आई कीप दिस पेन ऑन माई हैंड, राइट, ये पेन इस सरफेस को प्रेस करेगा, कितना फोर्स से? नॉर्मल रिएक्शन से। तो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? एन। तो एन क्या है? एक्शन। किसके ऊपर? पेन के ऊपर। कौन लगा रहा है? सरफेस ऑफ द अर्थ। रिएक्शन कहां है इसका? सरफेस ऑफ द अर्थ पर। कौन लगा रहा है? पेन। ये तब जब सरफेस और पेन कांटेक्ट में आए, इसीलिए इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। mg is not a contact force, n is a contact force। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है n mg के बराबर कैसे हो सकता है? According to Newton's third law, action reaction are equal and opposite, right? ऑपोजिट तो आपने दिखा दिया, इक्वल है। आप कहोगे सर n तो mg के बराबर होता ही है, पक्का हमेशा? नहीं होता। लिफ्ट में रख दूं, अगर एक लिफ्ट में रख दूं बॉडी को नीचे, तो क्या n mg के बराबर होगा? तो इसका मतलब n mg के बराबर हमेशा, तो ये इसका एक्शन रिएक्शन हो नहीं सकता। ये भी इसका दूसरा तरीका है सोचने का। नोट करिए इस बात को। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? मेरा अंदाज समझ में आ रहा है? दो ही चीजें चाहिए लाइफ में, और चाहिए क्या? अभी क्लियर नाउ? संदीप सर सिर्फ बेसिक्स पे बात करते हैं। माय नेम इज संदीप सिंगल बाय द वे। आई टॉक ऑन बेसिक्स एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, सवाल तो हो ही जाते हैं। मिटा दो उसको। ये बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं इसके ऊपर। Now, coming back to where I wanted to start from was, tension is an internal force. In this system, tension is an internal force. और जब कोई फोर्स इंटरनल होती है तो उसका नेट सम कितना होता है? It has to be zero. That means, can I say that net tension is zero? बोली हाय ना? Yes. अब अगर मैं इसमें एक डॉट प्रोडक्ट ले लूं टेंशन की एक्सेलरेशन के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा? कितना? So can I say net work done by tension is always, कह सकता हूं? That means T dot A is, sum of T dot A should always be zero. ध्यान सुनिएगा। If I say this is T, ये कितना होगा? ये कितना? 2T 2T 4T। ये कितना? क्या? हाँ या ना? अभी ठीक लग रहा है? ये इतनी मेहनत करानी जरूरी थी आपको मेरे से? इसके बिना मजा नहीं आता। सारे मासेस दिखाई दे रहे हैं आपको? उनके साथ एक्सेलरेशंस कितनी है वो दिखाई दे रही हैं, उनके साथ टेंशन कितनी है दिखाई दे रही है। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर देते हैं। कैन आई से टी डॉट ए वन प्लस इस मास के ऊपर टोटल टेंशन कितनी है? 4 + 4 इज, और इस पर कितनी है?
कितनी? Dot A3 equals tick. I can remove the dot. They're in the opposite directions. So what do I get? Clear? अब इस पर 3-4 सवाल कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक, मचाएं? मेरे को मिटाना? Can I wrap this off? Great. एक और सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा सिंपल. We want to calculate the relation between the acceleration of the three masses. कर लें क्या? हो जाएगा ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कैसे मचाऊं? बोलते रहो, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. कितना? बोलो बोलो जोर से. ये कितना? ये कितना? चलो खत्म करते हैं. ये कितना? So 2t a3 equals t a1 plus t. So 2a3 is हाँ या ना? परफेक्ट है एकदम. इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर. खलास हो गया. आगे चलें. Let's see something else also. The same question in a different format. ये नीचे आ रहा है, ये राइट में जा रहा है, और ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा. दिस एंगल विल कीप चेंजिंग. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दिस एंगल इज थीटा. से दिस एक्सेलरेशन इज a1 एंड दिस इज a2 एंड द सिस्टम इज, ये सारे क्वेश्चंस में देयर इज वन थिंग कॉमन. आई एम रिलीजिंग द सिस्टम फ्रॉम रेस्ट. आई एम अज्यूमिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर सेम. क्लियर? राइट, ग्रेट. आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 and a2. A1, A2, 30 seconds, 30 seconds. तो क्या नहीं मारने, वही लिखना है जो समझ में आया है. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो, राइट? सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट एन आंसर. करें? डन? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? अब ये क्वेश्चन आपको रियलाइज कराएगा इंपॉर्टेंस ऑफ अ डॉट. दिस क्वेश्चन विल टेल यू व्हाई डॉट वाज इंपॉर्टेंट. अभी तक टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था. यहां टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एक एंगल है. तो अब इसकी इंपॉर्टेंस आएगी कि डॉट का क्या मतलब होता है. मचाए? हो जाए? डॉट का एक और मतलब भी होता है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. If I say A dot B, it's AB cos theta. What does AB cos theta mean? Product of A and component of B in the direction of A. इसका मतलब जैसे डॉट आएगी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. All set? Can I say T into A1? बोलिए. Can you say that?
चलेगा? दिस शुड बी इक्वल टू t. अब इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज थीटा, ये एंगल कितना हुआ? डन. What is the component of A2 in this direction? A2 cos 90 minus theta कितना होता है? तो can I say this is equal to T A2 sin theta? बोलिए हाँ कह सकता हूं? So can I say ठीक. अब इसी खेल को एक और तरीके से खेलते हैं. ठीक. Let's think about these questions in a different way. बता दूं उसको? यार रखे रखते हैं, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी. तैयार हो? आप जानते हो how many possible types of pulleys exist? आपने पुली के क्वेश्चंस देखे अपने मॉड्यूल में? Have you seen them in HC Verma or in your module? पुली के क्वेश्चंस देखे कि नहीं देखे? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? नहीं देखे. किस किसने नहीं देखे? मतलब किताबी खोली ही नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंग. सच का सामना हुआ, एक और सत्य पता चला. ग्रेट. 3 तरह की पुली पॉसिबल है. उसके अलावा सारे केसेस, ऑल द केसेस विल बी a joint relation between 1, 2 and 3. फॉर एग्जाम्पल, पुली को जैसे दिखाई देती है ना, गोल गोल. देखिए ये रही पुली, ये रही बेचारी मासूम सी पुली. पुली में एक खास बात होती है, 2 धागे यहां पर लटके होते हैं. देयर आर 2 threads which are hanging like this and there is 1 thread here. Agreed? बोले हाँ ना? सही बात है. Now I said there are 3 possibilities of a pulley. Let's think why. क्यों हो सकती हैं 3 तरह की पुलीज? हो सकता है ये फिक्स्ड हो and both of them are moving. This is case 1. Case 2 could be one end is fixed, this is moving and this is also moving. Wow. This could be case 2. Third case, तीनों ही मूव कर रही है. हाँ या ना? सही बात है. इसके अलावा जब एंड्स ही 3 है और यही पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती. हो सकती है क्या? एक स्टूडेंट बोलता है सर एक और हो सकता है. हमने कहा हमें दिख नहीं रहा है. कि सर आप देख नहीं रहे हैं. हम कहा दिखाइए. कि सर आप इसको फिक्स किए हैं. हमने कहा किए हैं. ई को फिक्स कर दीजिए. और हमने कहा इसको क्या करें? कि सर इसको रिलीज कर दीजिए. तो हमने कहा एक ही ना केस हुआ ये. This actually I fix this or I fix this remains the same case. तैयार है? Are you all ready? पक्का? आप मुझे बताइए, कोई भी थ्रेड लेता हूं, उसके 2 ही एंड्स होंगे. इस थ्रेड की खास बात क्या होती है? This is inextensible. What is this? And you know the beauty of this thread is it's elastic also. Inextensible का मतलब इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती, और इलास्टिक का मतलब इसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है. नहीं समझे बात? समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? क्योंकि ये बढ़ सकती है. ये क्या बात हुई? मैंने ये नहीं कहा, यही कहा. मैंने कहा इसकी लेंथ बढ़ सकती है पर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से ये थ्रेड वापस अपनी लेंथ पर आएगा, और इस वापस लाने वाली फोर्स को टेंशन बोलते हैं. पक्का? सोचिए इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, टूट जाती. आप खींचते, ये ब्रेक हो जाती, क्योंकि लेंथ तो आपको कांस्टेंट ही रखनी है. तो यही कुदरत का कानून है, यही इसका नियम है. ये एक प्रॉब्लम देता है तो साथ में उसको सॉल्यूशन भी देता है. ये कहता है देखो यार लंबाई तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो उसने कहा फिर क्या करेंगे? खींचेंगे तो टूट जाएगी. एक काम कर देता हूं, इलास्टिसिटी दे देता हूं तुझको. बढ़ तो सकती है, वापस भी आएगी. ये भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? पक्की बात? तो 2 एंड्स ले लेते हैं. कौन सी थ्रेड्स बोलते हैं इनको? इन मेरी क्लास में बस एक ही प्रॉब्लम है. क्या? पूछो क्या? पूछो क्या? इट कैन नॉट बी अ मोनोलॉग. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊं और आप ही को सिर्फ फायदा हो. मुझे भी फायदा होना चाहिए. आपको मुझे भी कुछ सिखा के भेजना है आज. आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर टीचर टुडे.
and I can only become a better teacher if I teach better students, good students. मेरे पढ़ाने से आपको कितना फायदा होगा नहीं मुझे नहीं पता, आपको पढ़ाने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है ये मैं सोच के आया हूं. ऐसा होगा क्या? ऐसा होने वाला है कि नहीं? यस और नो? तो मेरे फायदे की बात करो. एक ही कायदा, मेरा फायदा. दो थ्रेड्स, दो एंड्स, एक थ्रेड. अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एंड को वेलोसिटी v1 से थ्रेड के अलोंग मूव करना है और इस लेंथ को कांस्टेंट रखना है, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड एंड इन विच डायरेक्शन? पक्का? यस और नो? पक्का है? नहीं तो इसका v1 होगा तो राइट इसका मतलब थ्रेड के अलोंग, क्या बोला मैंने? थ्रेड के अलोंग दोनों एंड्स की वेलोसिटी या दोनों एंड्स की एक्सेलरेशन सेम होती है. आइए अब इधर देखते हैं बात. ये आपको थ्रेड दिखाई दे रही है? इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको ले लेता हूं 2. मैं इस एंड 1 को उठा के यहां ले आता हूं. ये एंड कितना से ऊपर जा रहा है? पक्का? What about this end? Where is this end? On the and pulley is fixed. क्या बोला मैंने? This end is, बोलते रहो. इसके बाद अच्छा लंच मिलेगा अगर आप अच्छा बोलेंगे तो. This end is and the pulley is, therefore this end is also. सही बात है. अब मैं इस end 2 की बात करता हूं. आजा बच्चे, ये एंड, I love it. ये एंड कितने से? फैंटास्टिक. एक बात बताओ, ये एंड अगर ऊपर जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज. So I'll use a negative a1. If it is decreasing, minus a1. इसका कुछ हो सकता है? इल्ले. इसका इल्ले. The fixed है जी. What about this end coming down? Length increase, decrease? क्या यूज करता? ना तो लेंथ इंक्रीज करता ना लेंथ, तो उसका खानदान कितना होता? a1 किसके बराबर होता? इसलिए a1 a2 के बराबर होता है. वाओ. लिखो लिखो लिखो. इसको बोलते हैं p1 पुली 1. हम जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे वो आप ही डिराइव करेंगे और आप ही मुझे बताएंगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा. नहीं तो फिर तो ज्ञान हो जाएगा. ज्ञान मुझे नहीं आता देना. आई हैव नो ज्ञान टू गिव यू. साथ मिलके कुछ नया बनाते हैं. लेट्स क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन फिजिक्स. क्लियर होगी बात? ग्रेट. ये सब रिकॉर्ड होता है, इनको दे सकते हैं. ये जो हमारा लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है. कैन द स्टूडेंट्स गेट इट? वो फैंटास्टिक. यूट्यूब पे तो आप देख सकते हो. वहां पर भी मैं यूट्यूब पे ज्यादा अमेजिंग लगता हूं वैसे. अब केस 2 खेलते हैं. आज से ये सेंटेंस खत्म. पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? खेलेंगे और सोचेंगे. मतलब सोच के खेलेंगे. मतलब खेलना इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इज मोर इंपॉर्टेंट. केस 2 ऑल सेट? तैयार हो आप लोग? ये एंड क्या लूं? इसको मैं 1 को बाहर लेके आ रहा हूं. दिस एंड इज ऑन द एंड द पुली इज गोइंग. सो दिस इज second end. This end is on the pulley and the pulley is going, so this becomes, और इसको क्या लिया था हमने? तो ये कितने से ऊपर जा रहा है? क्लैरिटी है पूरी? एक सिंगल थ्रेड का बात कर रहा हूं. I'm talking about a single thread because one single thread is inextensible. Now when this end is 0, ये कितना हुआ? प्लस माइनस a1. ओए ओए की खान दे पाए हो, ऊपर जा रहा है. वो लेंथ बढ़ेगी घटेगी? तो बढ़ेगी तो बढ़े, तो बढ़ा दो. ये ऊपर जाएगा तो भाई यार बढ़ेगी कि नहीं? तो बोलो. और इसका क्या होना है बेचारे का? घटना है. घटेगा ना. ऊपर जाओगे तो लेवल इंक्रीज और डिक्रीज, तो माइनस खानदान इक्वल टू, तो a2 इक्वल्स खत्म. लिखो लिखो लिखो. मजा आ रहा है ना? ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. थ्रेड को बाहर निकालो, ऊपर मतलब देखो लेंथ को वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग नेगेटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव. ऑल सेट? आपको लगता था कि फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है? एक्चुअली फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग.
टीचर्स बोलते हैं फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आती नहीं, सोचते यार ये ऐसा क्या है इसमें इंटरेस्टिंग जो सर को दिखाई दे रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लैरिटी मिल गई पक्का? ऑल सेट? बता दूं? अब थर्ड केस आप करके दिखा दो यार। द थर्ड केस विल बी डन बाय यू। बचाइए, बस थ्रेड्स को बाहर निकालना है। निकालो 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 फटाफट फटाफट, 30 सेकंड है अपने पास, 30 सेकंड्स। A3 A1 A2 A3 चल बाहर थ्रेड्स को निकाल। एक, वेरी गुड। वो जी फिक्स कौन सी है जी इसमें, जबरदस्ती कर रहे हो, कोई है ही नहीं, देखो कमाल है, लड़की होशियार है। कहां के रहने वाले हो? वेरी गुड, आई लाइक इट। ये 2000 किलो के बैग्स नीचे रख लो। समझ में नहीं आ रहा कॉपियां कहां है तुम्हारी, बैग्स कहां है? रखो रखो रखो, प्रेशर बढ़ाते हो अपने ऊपर ऊपर खुद। जी आंसर कौन बता रहा है? लेट्स सी व्हिच गर्ल्स गिव द आंसर फर्स्ट। परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। निकालो एंड्स को बाहर, निकाला, बोलो। ग्रेट, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखूं? हाँ हाँ हाँ, इक्वल टू, सो A1 इज, ओ यार ओले इथे लगा ले, तू खुश रह, तो बुरा मान जाती है लड़की। और चुप है, देखना पड़ता है, ये किस लिए देखना, आंखों का इस्तेमाल करना। डन। और जो मेथड हमने पहले अभी काम करते, ये सेकंड मेथड है, बट अब इन दोनों मेथड्स को रिलेट करते हैं आपस में, क्या दोनों से सेम सत्य पर आधारित घटना आ रही है कि नहीं आ रही है। मचाएं, क्या लिया था बचपन में, क्या लिखोगे? T इंटू A1 इज T इंटू A2, तो T कटने के बाद A1 इक्वल टू A2, ये क्या था ना। इधर चलते हैं, ये कितना होता, ये कितना होता, ये खानदान कितना होता, क्या लिखता? T इंटू A2 इक्वल्स टू T इंटू A1, तो A2 कितना आया? 2A1। ऐसे किया था ना पहले भी, ये रिजल्ट आया था ना। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? वेरी गुड, आई लाइक इट। ये कितना, ये कितना, ये कितना होता, क्या लिखता? T A2 T A3 equals 2T A1, टक टक टक, 2A1 equals A2 plus. Now you have two methods to do it. You now have two methods to do it. And both the methods, now you know why you should do it like this. अब आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि मेरे को किस मेथड का इस्तेमाल करना है। वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। When you do lot of practice, you give lot of tests, you'll come to know कि where should I apply which method. क्लैरिटी मिल गई पूरी? मुश्किल था क्या? वेरी सिंपल। सबसे मुश्किल है बोर्ड को मिटाना। ये देख, गर्ल्स आर यू रेडी? आर यू रेडी? हो जाए सवाल। सांस ले लूं। राइट, एक बहुत हजारों साल पहले क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेते हैं। अब मुझे लगता है कि अपनी लड़कियां फिट है। दिस वॉज 2000 years बैक, जब सिविलाइजेशन पूरी बनी भी नहीं थी, तब अशोका ने यह सवाल चाणक्य से पूछा था। हाँ मतलब ये इतना पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अशोका ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव अगर मैं इन दोनों एंड्स को यू वेलोसिटी से पुल करूं डाउनवर्ड्स,
ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा? √2v। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अभी तो कराया आपको इस तरह का सवाल, करिए, क्या आंसर होगा बताओ? टू यू। गलत जवाब। अभी जो सिखाया उसका इस्तेमाल करो। क्या बताया आपके पास? दो मेथड से करने के, आप दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। यूज बोथ द मेथड्स टू सॉल्व दिस। Voice is not clear. Kare, let's start. Anybody who has the answer, tell me. What is the value of V? V is U. ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं थी। Udaan girls, they want to fly. They want to fly high. है ना भाई? चेक करो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, खुशबू से पता चल जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं ये देखना किस मेथड से सॉल्व किया है इस आदमी ने। जीने की इच्छा खत्म हो जाए। ये वो सिर्फ ये वाला ये हमने किया ना, अभी आया ना। ये देखो आदमी रास्ते में कहीं जहर का इंजेक्शन खुद ही लगा कहीं जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए रास्ते में। जी मचाया जाए, बोलिए सब लोग बोलिए। क्या सर? सर मचाओ, बोलो। मचाते हैं। आपको मैंने दो मेथड्स बताए, उसको देखने से तो आंसर आ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। शुरू करें। फर्स्ट मेथड कौन सा रखें? जो सेकंड मेथड है वो रखें। सेकंड वाला करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, यू हैव टू रिजॉल्व वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड। क्या बोला मैंने? ये एक थ्रेड है, ये इसके दो एंड्स है। Say I have a velocity v1 here at an angle alpha. I have a velocity here at an angle beta. If this length has to be fixed, constant, then the component of v1 along the thread कितना हुआ? And the component of v2 along the thread कितना हुआ? ये दोनों बराबर होने चाहिए। This both should be, जैसे ये थ्रेड था, आपने क्या बोला इसको? ये v1 था ना, ये कितना बोला आपने? v1 thread के along. If it is not along the thread, you have to resolve along the thread. Clear है? चलिए अब देखते हैं। तैयारी पूरी? कितने से पुल कर रहे हो उसको? ये कितना होगा? ये कितना है? किसके along लेना है? थ्रेड के along। इसके along कितना हो गया? ये पूरी एक थ्रेड है ना, इसका ये एंड कितने से जा रहा है? u। इसका दूसरा एंड कितने से जा रहा है? तो u किसके बराबर होना चाहिए? तो v कितना होना चाहिए? That's it. That's all. Simple. Keep it simple.
two ends, the velocities of both the ends along the thread should be same. अब टी लगा लेते हैं, पहले एनु कर लेते हैं, टी की करते हैं गाल. मुश्किल नहीं लग रहा ना? मुश्किल है? Is it difficult? Let's try the tension method now. ऊपर टी, बोलो हाय ना. ये भी और ये भी, क्या लिखोगे? टी इंटू यू प्लस टी इंटू यू. नाउ आई सेड डॉट होता है, यू हैव टू रिजॉल्व वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कितना है? बोलो v. इस डायरेक्शन में कितना होगा v? तो क्या लिखूं? t इंटू एंड t इंटू, बोलो, दो है ना यार टेंशन, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी है, तो ये कितना हो गया? 2tu इक्वल्स 2tv cos थीटा. थीटा थीटा गया, नहीं टी गया, यू भी गया, v बराबर u बाय cos थीटा. ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल लगे आपको. क्लियर? मजा आ रहा है? अभी हम पुली पुली खेल रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट. एक होता है वेज कंस्ट्रेंट. अभी जो हमने पढ़ा वो है पुली कंस्ट्रेंट. पुलीज के बीच में, in pulleys what is the relationship between the acceleration of various masses? Now we'll play wedge. Small wedge, it's placed on a smooth surface. ये smooth surface है. Angle theta, mass capital M. I place a small block, mass small m. Pakka? Done? I want you to find the relation between the acceleration of this mass and this mass. Find the relation between the accelerations of small m and capital M. हेलो, ये भी तो बताना आपको ही है. चलो पहले डिस्कस करते हैं. बड़े वाला वेज किधर जाएगा? Where can this move? In which direction can this move? Right, left? Right. कैसे पता? लॉजिक से पता है ना. माइंड में सोचो, विजुअलाइज करो. एक वेज है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा? किस वजह से जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से. किस वजह से? तुमको कॉन्टैक्ट फोर्स पता है ना कैसे निकालते हैं? पता है कि नहीं पता है? पहले वो भी चेक कर लूं. चेक करूं पहले? आइए चेक कर लेते हैं. मुश्किल तो नहीं लग रहा ना जो बता रहा हूं? यार ये दो ब्लॉक्स रखे हैं बचपन से, M1 M2 on a plane horizontal surface. इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है? They are in contact with each other. What is the contact force between them?
व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? 0. क्यों? बिकॉज कॉन्टैक्ट फोर्स तब होती है जब कॉन्टैक्ट होता है. सर हो तो रहा है कॉन्टैक्ट. एक और बात, कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब होती हैं जब एक्शन होता है, तभी रिएक्शन होता है. एक्शन कब होगा? जब आप इसको, so when you push this towards this, then there will be a contact force. तो अभी contact force कितना है इनके बीच में? If it is there, then it is non-zero. और अगर F 0 है तो contact force कितनी होगी? अच्छा ये बताना, इंक्लाइन प्लेन पर दो मासेस रखे हैं, अब कितना कॉन्टैक्ट फोर्स है? व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू? मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2? कितनी होगी? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस M2G. गलत जवाब. 0 आंसर है. क्यों? कॉन्टैक्ट कब होता है? गलत. ये तो मैंने पहले बताया था. कॉन्टैक्ट तब होगा जब मेरे और आपके बीच में कॉन्टैक्ट कब होगा? या मेरे और टेबल के बीच में कॉन्टैक्ट कब होगा? जब ये रेस्ट पर है और मैं मूव कर रहा हूं. अगर टेबल का वेलोसिटी और मेरा वेलोसिटी सेम हो, कॉन्टैक्ट होगा क्या? मेरा और इसके बीच में कॉन्टैक्ट कब होगा? जब ये या फिर इसका वेलोसिटी कम हो और मेरा वेलोसिटी, या इसका एक्सेलरेशन कम हो मेरा एक्सेलरेशन. ये जो दोनों मासेस रखे हैं बेचारे चूहे चूहे से, M1 और M2, इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, अलग है? एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास. फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन. M1 पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? G sin थीटा? नहीं नहीं. एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को रखेंगे, उसमें फोर्स कितना लगता है नीचे? mg sin थीटा. हाँ या ना? तो M1 पर कितना फोर्स लगेगा? M1g. कहां खो गई? कहां खो गई? सोच मत ज्यादा, सुन तू तो बस. अब M1 पर नेट फोर्स नीचे कितनी? M1g sin थीटा. उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? G sin थीटा. M2 पर कितनी फोर्स और एक्सेलरेशन कितना? दोनों का एक्सेलरेशन. कांटेक्ट हुआ क्या? इल्ले. नॉर्मल रिएक्शन कितना होता जी? 0. लिखना. अब आया ना बात समझ में? आ रहा है कि नहीं बात समझ में? हर चीज के पीछे लॉजिक है. और अगर इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर्स, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा. और मैं आपको बिना सोचवाए मानूंगा भी नहीं. क्लियर है ना? लॉजिकल. दैट मींस अब आगे से याद रखिएगा, दो बॉडीज कांटेक्ट में तभी होती हैं जब एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो. अभी समझ में आया? अब सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ी. नाम क्या तुम्हारा? मानसी. कहां के रहने वाले हो आप? कहां से? अलीगढ़ से. इतनी दूर से पढ़ने आते हो? मतलब आदमी रह कहीं और रहा है, आ कहीं और से रहा है, ऐसे वाली बात है. तो मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा पैदा कहाँ हुए थे. मेरा क्वेश्चन का जवाब आपने गलत किया. फिर ये क्या बात हुई? मतलब कहां से, जहां से हो वहीं से आ रहे होंगे ना. तो यू आर फ्रॉम गाजियाबाद. किस जगह गाजियाबाद में? अच्छा. हाउ मेनी आर यू फ्रॉम यूपी बाय द वे? उल्टा प्रदेश से कितने लोग हैं? एंड हाउ मेनी फ्रॉम दिस इज यूपी. एंड हाउ डिड यू रीच हियर? यू रोट अ टेस्ट. उड़ान का टेस्ट लिखा हुआ ना, एंट्रेंस टेस्ट. तो कैसे आए हो? मैं इधर ही आ जाता हूं. पक्की बात. याद रखना आगे से. यू नो, ये क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग कैसे होता है?
देखने से इतना बड़ा मास, ये बेचारा छोटा सा बच्चा, आप कह रहे हो दबाएगा कि नहीं दबाएगा? अरे पक्का दबाएगा सर। नहीं दबाएगा। इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। मजा आ रहा है? और खेलते हैं। अभी अभी लिखो, इसका नाम लिखो, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट खेलना। ठीक है, आज कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मचाते हैं, फिर इसके पास आएंगे। डन। ये वॉल, ये फ्लोर, ये लैडर। आप लेट आए, वॉल, फ्लोर, लैडर। डन। मुझे बताना, ये दोनों सर्फेसेस, बोथ द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। क्या है? माय क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट एंगल ऑफ थीटा विल दिस लैडर बी एट रेस्ट? इट विल नेवर बी एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो दैट मीन्स हमें फ्रिक्शन क्या देनी पड़ेगी। चलिए मैंने इसको रफ बना दिया। ठीक है, अब जरा सारी फोर्सेस दिखाओ। यहां पर कैसे, क्या दिखाऊं? ऐसे, कितना? N1। यहां पर पक्का? और क्या दिखाऊं? विच फोर्सेस? फ्रिक्शन। ग्रेट। यहां पर mg। पक्का ना? एक सेकंड डायग्राम बना रहा हूं। रॉड लंबा है, वॉल छोटा है। ठीक, यहां पर N2, यस और नो? यहां पर फ्रिक्शन। यहां N कैसे दिखाऊं? ऐसे, टू द, तो contact force, normal contact force is sometimes perpendicular to the surface and sometimes perpendicular to the body. Not at all. नहीं, अच्छा ये N1 क्लियर? पक्का? 100%? Right. Now, suppose I ask you what? I ask you a very simple question. ये N2 और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? Contact force. This is called normal contact force and this is called tangential contact force. This is called friction. ये दोनों contact forces ही है, right? इसको बोलते हैं normal और इसको बोलते हैं tangential, और इनके रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? Contact force. मेरा सवाल ये, इस क्वेश्चन में मैं पहले इसको मिटा देता हूं। My question is, can you tell me that if this rod is in equilibrium, ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, which means the contact force, what will be the direction of the contact force? Will it be like this? Will it be like this? What will be the direction of contact force if this rod is to be in equilibrium? Question समझ में आ गया? एक वॉल, एक फ्लोर, एक लैडर, फ्रिक्शन इधर है। I want this ladder to be in equilibrium. किसमें? स्टेबल, हिलना नहीं चाहिए इसको। उसके लिए फ्रिक्शन का और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? इज द क्वेश्चन रेलेवेंट? यस नो? रेलेवेंट है ना? आना चाहिए ना? खेल दिखाऊं आपको एक? आपने लामीज थ्योरम का नाम सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ लामीज थ्योरम? व्हाट इज लामीज थ्योरम? व्हाट इज लामीज थ्योरम? बताइए। मैं बताऊं? लामीज थ्योरम बोलती है that if a body is in equilibrium, लिखना नहीं, समझना है। लिखने के लिए संदीप सर वापस आ जाएंगे ना, टेंशन मत लो, समझो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को। इसको एक मजबूरी में नहीं करना है काम को, बिकॉज इस चीज के साथ आपको पूरी जिंदगी रहना है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ 2 साल पढ़ना है?
और फिर 4 साल पढ़ना है, फिर एमटेक करना है, फिर जॉब करना है. दैट मीन्स यू गोइंग टू लिव विद दिस प्रोफेशन फॉरएवर. Once you have to live with certain thing, you cannot live with a certain thing if you don't like it. You have to like it to stay with it. And how do you like it? उसका फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे इसको लाइक करना है, मुझे ये चीज को अचीव करना है. ये जब तक विल पावर जनरेट नहीं होगा, आंसर सवाल के आएंगे नहीं. जैसे रॉड इक्विलिब्रियम में है, लामीज थ्योरम क्या बोलते हैं? He says, if a body is in equilibrium, then all the forces acting on the body should pass through one point. Interesting. क्या बोला उसने? सब दोबारा बोलो. Have to pass through one single point. अंग्रेजी में इसको बोलते हैं concurrent. क्या बोलते हैं? That means if a body has to be in equilibrium, forces have to be concurrent. Wow. क्यों कहा इसने ऐसा? When we say a body, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Are you liking the way I teach? Relate कर पा रहे हो आप उससे? मैं आपसे पहली बार पढ़ा रहा हूं आपको, so it will take some time to adjust. ये adjustment हो गया है. Have you adjusted or you need some more time to adjust? Adjusted. यही खास बात होती है सक्सेसफुल आदमी की. समय नहीं लगता उसको सब समझ में आने लगता है अपने आप, ज्ञान अपने आप आने लगता है. रेडी? When we say a body is in equilibrium, it means two things. A, it is in translational equilibrium. ट्रांसलेशन का मतलब वो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाए. सेकेंड इक्विलिब्रियम होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. क्या होता है? वो रोटेट करना भी बंद कर दे. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन डू यू गेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? व्हेन द नेट फोर्सेस आर. एंड व्हेन डू यू गेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम? व्हेन द नेट टॉर्क. क्या? टॉर्क. बोलो, प्रोनाउंस करो. वाह, कितना अच्छा नाम है, टॉर्क. व्हेन द नेट टॉर्क इज. आप जानते हो टॉर्क क्या होती है ना? हाँ, उसका एनालॉग. इतने से काम नहीं ना चलेगा, ई का बाद की भी नॉलेज का जरूरत पड़ेगा. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. क्या होता है? आर क्या होता है? आर होता है, जैसे ये सपोज पेन है, इसको मुझे रोटेट कराना है, ठीक? तो ये रोटेट, मैंने फोर्स लगाई, ये मैंने फोर्स लगाई. क्या लगाया? फोर्स. सो दिस इज माई फोर्स, दिस इज एफ, और मुझे इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को रोटेट कराना है. तो पहली बात तो ये पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए. रोटेशन बॉडी तभी करेगा जब एक पॉइंट फिक्स्ड होगा. मैंने फोर्स लगाया ना, रोटेट कर रहा है ना. सो व्हाट इज टॉर्क? दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस. इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं एफ. सोचिए, मुझे टॉर्क लगाना है इस पॉइंट के अबाउट, और मेरी फोर्स यहीं से पास कर जाए, आर कितना हो जाएगा? टॉर्क कितना हो जाएगा? तो अगर सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर जाएं और मैं टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट ले लूं, तो नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो. नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताऊं, रिपीट अगेन, नो इश्यूज. इधर देखिए, ये पकड़िए, राजस्थान, होल्ड इट. ठीक है, ये सरफेस है और ये मेरा पेन है, ठीक? मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया. इधर देखो, उधर भी सामने दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? आई लाइक इट. प्लीज सी मी ऑन द वीडियो, आई लुक मच बेटर देयर. ठीक है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये मैंने फोर्स लगाई, ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस, ये फोर्स. टॉर्क होता है एफ इंटू आर. अब अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा और पास लगाऊं, आर छोटा होगा और टॉर्क की वैल्यू, इसीलिए ज्यादा फोर्स लगा के उतने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा. और इसके पास आ जाऊं, टॉर्क की वैल्यू और कम हो जाएगी. हाँ या ना? फोर्स और लगानी पड़ेगी. और अगर ये पूरी खानदान की फोर्सेस, ओ छोटंकड़, ओ इधर देख, और ये सारी की सारी फोर्सेस अगर इसी पॉइंट से लग जाएं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? अब सोचो, इस पेन के ऊपर फोर्स लगा, पेन नहीं चाहिए, लगा फोर्स, ये से लगाई. आप भी लगाओ, ये लगा दी, मैं भी लगा रहा हूं, ठीक है, हम सब लगा रहे हैं.
अगर इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट से पास कर जाए तो सारी फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? आई लाइक इट। तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगी। दैट मीन्स इफ द रिजल्टेंट और ऑल द फोर्सेस पास थ्रू वन पॉइंट और वो पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालूं तो द नेट टॉर्क विल बी रोटेशनल। फैंटास्टिक। अब इस जानकारी के बाद इस सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है जी? बोलते जाओ। N1 है। क्या है? ये क्या है? मैं इसको ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूं। ये फोर्स और ये फोर्स यहां मिल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहां से पास कर जाए देन दिस रॉड विल बी इन। और मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? मिल गया जवाब आपको? लिखिए। स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको। कोई बॉडी, लॉजिक समझ में आया? वेरी गुड। ये लड़कियां बड़ी शार्प है भाई। वेरी गुड। क्या रैंक मन में लेके आए आप? एडवांस आईआईटी जेईई में क्या रैंक सोच के आए हैं? सच्ची चीज बताना। आप में से कितने लोगों ने रैंक 1 मन में बना के आए हैं कि साहब, मैं आपको एक वो बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आज तक की हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटीज, रैंक 1 कभी किसी लड़की की नहीं आई। बोलो, है कोई जो रैंक 1 ला सकता है? कौन लाएगा रैंक 1? घबरा क्यों रहे हो? बोलो, हाथ रख के बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई फॉर रैंक 1? सब नहीं करते हैं ट्राई, बोलते हैं सब ट्राई करेंगे। व्हेन आई से ट्राई करेंगे तो उसका फर्स्ट स्टेप है आज से सोचना, और जो सोचेंगे उसको एंजॉय करना। सो देयर आर 2 mantras आई हैव गिवन यू। ए, स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट एंजॉयिंग। दोनों चीजें क्लियर है? चलिए और खेलते हैं। डस्टर, ठीक। अब केस 2 देखते हैं। याद है केस 2 क्या था? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या था? हाँ भाई, कुछ ऐसे, ये ऐसे, राइट? mg ऐसे, बोलो हाँ है ना। ये N2, ये फ्रिक्शन। If I ask you what will be the direction of the resultant of both these two forces, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको आगे, फिर इसको ऊपर, फिर इस पॉइंट को ढूंढेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पॉइंट से पास कराएंगे। लिखिए, द क्लास स्टिल 2:45। कब तक लेना क्लास? क्लियर? मजा आया? और खेलेंगे? चलिए। क्या बोलते हैं इसको? ये इक्विलिब्रियम में लाने का लामीज का एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था। अब लामीज का पार्ट 2 बताता हूं आपको। व्हाट इज लामीज थ्योरम पार्ट 2? बताइए। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, F2। आई वॉन्ट दिस बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। थर्ड का लगनी चाहिए। कैसे पता? कैसे पता? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे बॉडी, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है। अब ऑल द 3 फोर्सेस आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट, therefore this body should be in equilibrium. So Lamy said, if a body is in equilibrium, then all the forces are passing through one point. Then he said, if suppose this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma, then he suggested F1 upon sine of this.
F2 upon sine of gamma is F3 upon sine of alpha. That's the second part of the Lami's theorem. So the first part is ensure all the forces pass through one single point. ये logic, ये चीज जेई के अंदर कितना हेल्प करेगी, you have absolutely no idea. I'll try another question. मिटा दूं उसको? आपने इसका नाम सुना है? पिवट का नाम सुना है? A body is pivoted. इल्ले नहीं सुना? कहां दिखाऊं? हजारों जगह दिखाने के लिए. ओह इंटरेस्टिंग. ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? क्या बोलते हैं इसको? बोलना आप क्या बोलोगे? कोई बच्चा पूछा आपसे, दीदी दीदी ये क्या है? क्या बोलोगे? स्टैंड. स्टैंड तो पूरा खानदान है. ये क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उर्दू, बंगाली, महाराष्ट्रन, तमिल, कोई क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा. हाँ अब है तो है. अब घर जाके अपने दादा से पूछा, दादाजी ये क्या है? अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो कहेंगे कब्जा भैया. क्या बोलते हैं इसको? इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड पिवट. क्या बोलते हैं? क्या रोल है पिवट का? इस बोर्ड को ये पकड़े हुए है. आप इसको खोल दो तो ये बोर्ड, तो पिवट का काम होता है किसी चीज को पकड़ के रखना. जैसे ये पेन है, मैंने पेन को पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आई विल से दैट दिस पेन इज पिवटेड एट दिस पॉइंट. ये भी एक तरह का कॉन्टैक्ट है. एक पिवट ने अगर इसको पकड़ा है तो ये भी कॉन्टैक्ट है. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस को किस नाम से जानते हैं हम? वो बता देते हैं आपको. दे आर कॉल्ड, जैसे सपोज ये पिवट, पिवट की शेप ऐसे होती है. मैंने ये रॉड दिखाया, क्या बोलते हैं इसको? पिवट. जैसे एक रॉड को मैंने यहां से हैंग किया, देखा होगा आपने किताबों में ऐसे बना होता है ना. किताबें खोली कभी? अगर खोलोगे ऐसी कोई फोटो में दिखाई देंगे आपको. ट्राई करना आज. इसको पिवट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? पिवट. यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स का एक नया नाम है आर वाई एंड आर एक्स. क्या बोलते हैं? सो दिस इज आर वाई एंड दिस इज, ये आपको अब तक मालूम होना चाहिए था. यू शुड हैव नोन दिस. यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स. ये होगा ही नहीं फिर आपसे आगे. ये बहुत जरूरी है करना. ये क्लियर होगी बात? क्या बोलते हैं इसको? पिवट. अभी हम क्या किए मिस राजस्थान, हम इस पिवटवा के अंदर एक रॉड फंसा दिए. तो ये रॉड क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? गिर जाएगी. बोलो गिर जाएगी. वेट से नीचे गिर जाएगी. वर्टिकल प्लेन में रखिए, ऐसे रखिए ना. क्या करेगी बेचारी? हाउ बैड. हम नहीं चाहते गिरे, तो क्या करें? इसको टाइट कर दें, मतलब इसकी जान ही ले लें. और कोई तरीका? एनी अदर मेथड? सपोर्ट कैसे? स्ट्रिंग से दे दिया. ये क्या? स्ट्रिंग. ये क्या? रॉड. ऑल सेट. आपको मुझे ये बताना है, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, क्या है ये रॉड? यहां से निकलने वाला रिएक्शन कहां से पास करेगा? पिवट पर रिएक्शन होता है. आई वांट के पिवट से निकलने वाला रिएक्शन पास कहां से करेगा? द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. कहां की रहने वाली हैं आप? रेवाड़ी. सोच के बता. रॉड इक्विलिब्रियम में है, क्या करोगी? लामी थ्योरम ने क्या बताया था? ऑल द फोर्सेस शुड पास थ्रू. थ्रेड में क्या लगता है? और रॉड में क्या होती है? वेट. वेट कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ मास. डायरेक्शन क्या होती है? तो आप नहीं बना सकते? नहीं बना सकते क्या? एमजी का दिखाऊं इसका?
बोलो। और टेंशन कहां दिखाऊं? इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो ये दोनों कहां से पास कर रही है? तो रिएक्शन कहां से पास करना चाहिए? Are you understanding what I'm talking about? एक और क्वेश्चन करें? ध्यान से देखना बच्चों, क्लियरली सुन लो। मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, इंप्रूव होती है। केमिस्ट्री याद करने से आती है। फिजिक्स महसूस करने से आती है। क्या बोला मैंने? विजुअलाइज। ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड है। दिस इज द ओनली थिंग विच हैज एब्सोल्यूट लॉजिक। फिजिक्स इज मिरेकल। और आप इंजीनियरिंग में जो पढ़ेंगे फिजिक्स ही तो पढ़ेंगे आप। तो आज से महसूस करना शुरू करेंगे। जब मैं कोई चीज बनाता हूं उसको ध्यान से देखना। एक फ्लैट सरफेस है, प्यार से देखो, बड़े प्यार से। कितनी प्यारी फ्लैट सरफेस है। एक इंक्लाइन बनाया मैंने 30 डिग्रीज पर। कितने पर? एक इंक्लाइन बनाया मैंने 60 डिग्रीज पर। ये both these inclines are fixed. They both are fixed. So they're fixed and frictionless surfaces. Now I keep a rod here. And the rod is in equilibrium. And the rod is in, ये एंगल कितना होगा? फोटो तो बना ही लीजिए कम से कम। जीवन में कुछ तो कर ही लेंगे। एंजॉयिंग इट। महसूस करना, मैंने बोला ना आज फील करना है। महसूस करो। एक सरफेस है, एक रॉड रखी है। क्या हो रहा होगा? क्या होगा? क्या क्या होगा इसके पास? रॉड के ऊपर क्या लगेगा? पहले कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तुमने पहले परपेंडिकुलर बना ली। तेरा तो एंगल वैसे 90 दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। ये तेरी कॉन्टैक्ट फोर्स है। हाँ हाँ या ना? ये भी है। ये कहां से पास कर रही है? एमजी कहां से पास करेगा? ये बात आई, कुछ बात समझ में कि नहीं आई? अब निकाल इस एंगल को। तो फिर रॉड कैसे रखा होगा? नहीं, ये दोनों ही एंगल बराबर बना दिए। एक 30 मैटर 30 की तरह से बनाइए, एक 60 की तरह से बनाइए। देखिए ये रॉड रखिए, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी ऐसे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से लगेगी, ये इनका कॉन्टैक्ट है पॉइंट। इसका मतलब इस रॉड का एमजी इसी लाइन, इस पॉइंट से पास करना चाहिए। इसका मतलब ये एमजी हुआ, हाँ या ना? तो अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो एमजी भी इसी पॉइंट से पास होगा। ये एंगल कितना है? 30। ये कितना है? ठीक है, पक्की बात? अच्छा, ये एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है। नाउ ये तेरा N1 है और ये तेरा N2 है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। क्या बन गया ये? स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। बन गया स्क्वायर, है ना? इसे ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, चलेगा? ये एंगल कितना है? 30। तो ये एंगल कितना, सॉरी हाँ, ये एंगल कितना हो गया? 60। ये ज्योमेट्री से काम हो गया जी। ठीक, कहां से पास कराएगी एमजी?
हाँ, जहां का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं से एमजी पास करेगा. यस 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 यस. आप पीछे बैठ गए, दिख नहीं रहे आप, आगे बैठा करिए. जो भी कर, दिखाओ, कॉपी दिखाओ. I don't like this. Nobody sits idle in my class. मेरी क्लास में कोई भी खाली नहीं बैठेगा. मैं पीछे आके चेक करता हूं. कुछ तो बनाएंगे आप. बनाओ, N1 बनाओ. घबरा क्यों रही हो? ये N2, ये N1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी बना. अब तूने गड़बड़ क्या करी है? ये 30 दिखा रही है तो ये 60 दिखा रही है. दोनों को, ये दोनों की सेम. ये 30 कैसे हो सकता है? थोड़ा छोटा दिखाना इसको ऐसे. एमजी यहीं से पास करेगा ना. दैट्स अ स्पिरिट. ग्रेट. ठीक है, दिखाओ दिखाओ. N1 बना के दिखाओ. कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना के दिखाओ, बाकी सब हो जाएगा. ये N1 N2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना. अब तो बनाया इतना ऊपर है कि बनेगा ही नहीं. दिखाना. दिखाओ. गुड गुड गुड. दिखाओ. का N1 N1 बनाओ. हिम्मत से, हिम्मत करो थोड़ी सी. N1 बना के दिखाओ. घबराना नहीं है. You're a teacher. पढ़ाती हैं आप? स्टूडेंट, स्टूडेंट हो? वेरी गुड. तो पीछे क्यों बैठे हो फिर? बना के दिखाओ. हाँ, ठीक बना रही है, ठीक बना रही है. गुड गुड गुड. सब लोग बनाइए. एवरीबडी शोज मी द कॉपी. ग्रेट. चलिए. राइट गर्ल्स, आई बी रेडी? आर वी रेडी? ये क्या, ये क्या, ये क्या? इसका मतलब mg इसी पॉइंट से पास. बोलो हाँ के ना. ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल कितना हो गया? ये साइड इसके बराबर है सेंटर ऑफ मास, तो ये साइड इसके बराबर होगी. क्या बन गया? स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये कितना है? 30. ये कितना आ गया? ज्योमेट्री. यू कैन प्ले फिजिक्स विद ज्योमेट्री प्रोवाइडेड. कॉन्फिडेंस रखो N1 बनाने का. घबराते क्यों हो यार? N1 N1 की तरह बनेगा, N2 N2 की तरह बनेगा. आया ना बात समझ में? So the third चीज एक और सिखा रहा हूं मैं आपको. क्या बताया मैंने? फर्स्ट थिंग इज थिंकिंग, सेकंड थिंग इज एंजॉयिंग, एंड द थर्ड थिंग इज बी फियरलेस. डरना नहीं है. मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है. आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स. सो आई वेंट टू साउथ अफ्रीका. तो सबने मुझे कहा कि पैराग्लाइडिंग या हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना ये बहुत अमेजिंग होता है साउथ अफ्रीका में. मैं कहा भाई साहब मुझे नहीं जाना. बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे नहीं करना. तो मेरी पूरी फैमिली ने कहा यार यू कम ऑल द वे हियर. अच्छा एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं, तुम देखना. यार ये बहुत अच्छी ऑप्शन है. आई विल डू दिस. सो आई वेंट विद माय फैमिली एंड सैट इन द हेलीकॉप्टर. अब मैंने देखा सब लोग नीचे कूद रहे और शोर मचा मचा के. मैं पागल है, इतनी जान निकली पड़ी है. ये खुश मतलब इतना दुखी हो तो फिर कर क्यों रहे हो ये? फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद बड़े मजे आ रहे हैं सबको. तो आई आस्क्ड दैट गाइड, द कोच. नाउ आई विल टेल यू द रोल ऑफ अ कोच. मेरा क्या रोल है मैं आपको वो बता रहा हूं. आई आस्क्ड दैट गाय, कोच साहब कैन यू इंश्योर वन थिंग, दैट इफ आई जंप आई वोंट डाई. ही सेड if you jump with me you won't die. मैंने कहा is there an option that we can both jump together? कहता yes there is an option. I said I want to have it because he told me you won't die. आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर आपसे सिर्फ ये बोल दे, आप पूछो डॉक्टर साहब will I stay alive and say yes you can, you are. ना तो कोच को मालूम था, ये कोच को मालूम था और ये डॉक्टर को भी मालूम है कि जीने और मरने की प्रोबेबिलिटी बराबर है. But that is why he is a coach and that is why he is a doctor and that is why I'm a teacher.
मेरा काम सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं है, आपके अंदर जो छुपा हुआ डर है उसको बाहर निकालना है। आप जितनी डर लगता है आपको N1 N2 बनाने से, वही प्रैक्टिस करनी है N1 N2 बना के देखने की। जहां हमको डर लगता है यार एमजी कहां से पास करेगा, हमको बना के देखना है एमजी कहां से पास करेगा। आप हो ना सर, गलती करेंगे तो आप बैठे हो पीछे। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं स्टूडेंट्स, इन माय करियर ऑफ स्पैनिंग मोर देन 16-17 years. I don't know how I teach, how well I teach. One thing is for sure, मेरे स्टूडेंट्स फेयरलेस होते हैं, दे fearless. उनको डर नहीं लगता। मैं कोशिश करूंगा आपका डर दूर करने की, लेकिन ये होगा तब, कब होगा? अगर मैं कोच से ये नहीं पूछता कि क्या मैं जंप कर सकता हूं, तो मुझे ज्ञान देता वो? अगर आप मुझसे नहीं आगे बढ़ के कहेंगे यस सर आई वांट टू फाइट विद माय फियर्स, कैन आई हेल्प यू? आई कांट हेल्प यू। डिड यू एंजॉय दिस क्वेश्चन? अब एक बेसिक फॉर्मेट रखना, क्यों कोई चीज ऐसे होती है। एक चीज और बताता हूं, इक्विलिब्रियम में आपने एक बात नोटिस करी है, व्हेन यू फिक्स अ रॉड, इसको क्या बोलते हैं? पिवट। पिवट, इसको पिवट भी बोलते हैं, इसको हिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, व्हेन आई हैंग अ रॉड फ्रॉम अ पिवट, ये हमेशा रॉड ऐसी क्यों आती है, ऐसी क्यों नहीं रहती? मतलब दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इन दिस कंडीशन, नॉट इन दिस कंडीशन। व्हाई? जो चीज अभी सिखाई है उसी का रोल है। क्या पास कर रही है? अभी मैंने क्या बताया? व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन शुड पास थ्रू। यहां पर रिएक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है? आर एक्स बताया था ना अभी, एंड आर वाई। और तीसरी फोर्स कौन सी है? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास कर रहा है? इफ mg is acting here, mg कहां से पास करेगी? So the net torque will be, if by the way mg is here, then this force is not passing through this point, therefore this rod will not be in. That is why when you hang a rod, the center of mass of the rod will always lie below the point of pivot. नोट करिए, जो वेट होगा बॉडी का, इफ अ बॉडी इज हैंगिंग, देन द वेट ऑफ द बॉडी कहां एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पर। अगर इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रहना है तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए? जस्ट बिलो द पॉइंट एट विच इट इज हिंज्ड। क्लियर? एब्सोल्युटली। समझ में आया? आया समझ में? बना फिगर बना पहले। यस, दोनों चीज दिखाना कि यहां ये सही क्यों है और वो गलत क्यों है। Are we clear? Yes, very good. We are left with 5 minutes, right? Before we wrap it up for today, what was this question? Find the relation between the acceleration of, all set? तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, सर what will be the directions of accelerations? Now you know the direction of acceleration of this body will be towards right. What will be the direction of acceleration of small m? ऐसे। रिवाड़ी कहां देख रही हो? कॉन्सेंट्रेशन यार, रोटेट करो, थोड़ा रोटेट करो। ग्रेट। अगेन, हाउ विल दिस बॉडी मूव? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस लाइक दिस। कितने लोग को लगता है ऐसे जाना चाहिए सर? ऐसे कब जाएगा? जब ये फिक्स्ड होगा। लेकिन ये तो फिक्स नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा? इन दोनों को साथ रहना है,
तो थोड़ा सा इधर जाएगा, जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा। इसको ले लेता हूं स्मॉल ax, बोलो हाय ना, और नीचे भी आ रहा है तो इसको ले लेता हूं। पहले ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आई एम सेइंग इफ देयर इज अ वेज एंड इट इज फिक्स्ड and I place a body here and I ask you how will this body move, definitely like this, 100% like this, hai na? But if I say this wedge can move and definitely will move and it is moving in this direction, then this block will move with the wedge in this direction and also this body will fall down, तो एक acceleration यहां पर होगी. Can you tell me the relation between ax and ay? भी थोड़ा करो. उसने अशोका चाणक्य प्रॉब्लम बता दी. He took it so seriously. I love it. And the second question is, sir, we did not understand the concept of pivot. दोबारा बताऊं, पिवट का कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? आप में से कौन समझा सकता है बोर्ड पर आके पिवट वाली चीज? आप कम कम समझा सकते हो? अरे वाह, ये होती है ना बात कॉन्फिडेंस की. ये क्वेश्चन ये था, ये पिवट है, ये रॉड है. एंड माय क्वेश्चन इज वाज कि ये रॉड ऐसी क्यों होगी, एक्सप्लेन करो. पकड़ो उसको, ये माइक है, अपने मुंह के पास रखो. पिवट पे दो फोर्स लगती है, ये rx होती है और ये ry. ये इस डायरेक्शन में क्यों होगी? क्योंकि इसका जो mg है वो ये होगा. और हमें पता है कि जब तीनों एक ही पॉइंट से फोर्स लगेंगी तो ही वो इक्विलिब्रियम पे होगी. तो इसका जो ऊपर होगा ऊपर डायरेक्शन में, तो ये तीनों पॉइंट एक साथ होंगे. तीनों फोर्स एक पॉइंट से लगेंगे तो बोर्ड जो रोड होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी. अगर ये कंडीशन ऐसी नहीं है, इफ द रोड इज इन दिस डायरेक्शन, इसका mg यहाँ हो जाएगा और इसका mg जो हम mg दिखा दे जल्दी से, सब देख रहे थे YouTube पर नीचे. लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगी ऊपर, लेकिन एक फोर्स यहाँ होगी और दो फोर्स, तीनों फोर्स एक साथ नहीं होंगी, तो द रोड इज नेवर इन इक्विलिब्रियम. क्लैप फॉर हर. नाम क्या आपका? नीतू शर्मा. भाई नीतू कमाल करे, तू तो मेरे से भी अच्छा पढ़ाती है. बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पढ़ाऊं तू आगे पढ़ाएगी. मजा आया कि नहीं आया? That is the magic of knowledge. The magic of knowledge is that when you're happy and you're thinking, life chill हो जाती है बिल्कुल. अब देखो, इधर चलते हैं थोड़ी देर. ये क्या कर दिया मैंने? नीतू की बच्ची क्या करके चली गई? ये एक समझ में आता है. एक चीज और, कभी भी हाथ तब तक मत बोलना जब तक सही ना लगे. मानते हो एक्स हो सकता है, ए वाई भी हो सकता है ना. माई क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी ax a में या ay a में कोई रिलेशन है क्या? आपको देख के ऐसा तो लग रहा सर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ax a के बराबर, ऐसी फीलिंग आ रही है? कितने लोग को आ रही है? हाथ उठाना. फीलिंग आनी जरूरी है. सही बात है, मुझे भी ऐसा लगता था पर ऐसा है नहीं. पूछो क्यों? वो यों इन दोनों को कांटेक्ट में रहना ये पक्का है. आप ही कह रहे हो ना ये इधर मूव कर रहा है एंड दिस ब्लॉक इज इन कांटेक्ट. यू वांट दैट दिस ब्लॉक शुड बी इन कांटेक्ट विद द वेज. बोलो हां ना. कांटेक्ट तभी होता है जब अलोंग द कॉमन नॉर्मल. अच्छा बताओ, कांटेक्ट का मतलब कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? अलोंग द नॉर्मल. Two bodies will remain in contact if their accelerations along common normal are same. लिखो. क्या बताया मैंने? बस ये तो काम बहुत करवाती है. Two bodies moving together. Two bodies moving together. Now, when I say moving together, it means they are in contact. Will continue to move if the accelerations of both the bodies, if the acceleration of both the bodies along the common normal are same. ठीक है? So since the time is gone, next week हम डिस्कस करेंगे. बड़े चलाक हो तुम.
चलो, ये कॉमन नॉर्मल है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इस वेज का एक्सेलरेशन क्या है, ए। ये एंगल कितना हुआ, थीटा। ये एंगल कितना हुआ, ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, फैंटास्टिक। तो बड़े वज का मैंने ए साइन थीटा निकाल लिया। अब जरा इस छोटे वाले की बात करते हैं। ये कितना है, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, अभी चेक कर लेते हैं। ये थीटा, ये कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, और ये कितना हुआ। तो द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स अलोंग दिस विल बी क्या, हाँ या ना। एंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वाई अलोंग दिस विल बी ए वाई, and this should be equal to, this is the constraint relation between the two wedges. नेक्स्ट क्लास जब आपके साथ नेक्स्ट वीक होगी, आप जानते हैं क्या कराने वाला हूं, आपको दिखाऊं ट्रेलर। एक वेज लेंगे, क्या लेंगे, ये मूविंग होगा, इसके ऊपर बेचारा एक और मास रखा होगा, ये भी मूविंग होगा, इसके ऊपर एक और ब्लॉक होगा, ये भी मूविंग होगा। हम इस मास और इस मास की एक्सिलरेशंस का आपस में रिलेशन निकालेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
a very warm welcome to all of you in this Udaan project. I mean, it's a few days since you have started, a few weeks. So I hope you are enjoying it. Of course, you'll need to work very hard, but nothing comes without hard work. So the topic today that we are going to take is quadratic equations. This topic I will be continuing today and tomorrow, and we are going to study quadratic equations, quadratic expressions, about their roots, and the most important thing is the graph. How do we graph a quadratic expression, right? Now, what is a quadratic expression? Any expression of the form ax square plus bx plus c equal to any expression of the form ax square plus bx plus c, where a is non-zero and abc, they are either complex numbers or real numbers, is called a quadratic expression. Generally, they can be complex numbers, but in our study, we will take them to be real numbers. So I will just say that ABC belong to R, where R denotes the set of real numbers. Now, A we are taking non-zero because if A is 0, it will not be of the second degree. This we denoted by Fx, and Fx equal to 0 is called a quadratic equation. So the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Now, how many roots does a quadratic equation have? It has 2 roots, and they are given by x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root over 2a. The expression b square minus 4ac. This is called the discriminant. The word is discriminant. And it is generally denoted by D. Some people also denote it by delta. Now what can happen? This D is under the under root sign. And when does the square root of a number exist? When it is either 0 or positive. You can't find under root of minus 3. Actually, it is complex number. It is I root 3, where I is under root of minus 1 iota. So the roots of this equation are these. So the nature of the roots, it depends on delta, and we'll say if D is equal to 0, then roots are equal. If D is greater than 0, roots are real. Roots are real, equal and real. They are real also. Roots are distinct and real. And if D is less than 0, roots are complex. Some people just use the word imaginary, but really they are of the form, say, A plus iota B. This is what the roots are. Now, let us see, let us form an equation with roots alpha and beta. Equation. Form an equation with roots alpha and beta. So what do we have here? The equation with roots alpha and beta will be x minus alpha into x minus beta is 0. And this will mean that x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta is 0. So you don't need to know if you know the roots, you can form the equation.
But if you can see here that if we know just the sum of the roots and the product of the roots, we can still form the equation with roots alpha and beta. So the equation with roots alpha beta is x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. We don't need to know the roots separately. It's sufficient to know their sum and product. Of course, if you know the roots, you can easily find it. So if you have this equation, is this clear? If you have any questions, please feel free to ask. So consider the equation. Ax square plus bx plus c. All the time we are assuming that a is non-zero and a, b, c are real numbers even if it is not mentioned. When we are considering a quadratic equation, it is understood that a is non-zero. B and c may be 0. So what we have here is alpha plus beta. You can see from here, if you divide by a, because a is non-zero, plus b by a times x plus c by a. I'm giving you a slight proof also. I'm sure you know this result even before. So what if you just compare it with this equation? From here, what do you see? That minus sum of the roots should be b by a. So sum of the roots, what is it? Alpha plus beta is minus b by a. And product of roots, I've given you a short proof also, which is alpha beta is c by a. This is a very important result, both of these. What are they doing? You are getting the relationship between the roots and the coefficients of the quadratic equation. So can we just have page 1, please? Page 1. These are some very important, useful results. We'll just take them one by one. If b is equal to 0, what happens? If b is 0, you will have that alpha plus beta is 0. That means the roots are equal in magnitude but opposite in sign. That is what point number 1. The roots are equal in magnitude but opposite in sign. You see, the thing is, I'm explaining these things to you, but you should know them, because when you're going to do questions, you should know the results. In any entrance exam, it's speed, accuracy, time. So you have to have the speed. You may be able to do it by a longer method, but you need shorter methods to do it. And for that, you should know the formulae and the shortcuts. So b equal to 0 means the roots are equal in magnitude and opposite in sign. You get from here. If c is equal to 0, you will get that ax squared plus b, or the product of the roots is 0. That means one of the roots must be 0. Ax square, you can see from here also, plus bx is 0. That means another very important result. Whenever you write that the product of two numbers is 0, then what do you have? At least one of them is 0. This is not true in matrices. When you study matrices, you will realize that the product of two non-zero matrices can be non-zero. But in numbers, if the product of two numbers is 0, at least one of them has to be 0. So if c is 0, then we have that x equal to 0 is a root. If b is equal to c is equal to 0, the third one, if b is equal to c is equal to 0, then what do you get? The equation will just become ax square is 0, a is non-zero, so both the roots are 0. So, and what do you have if a equal to b equal to 0 actually, equal to c equal to 0? It just becomes you will have the 0 times x square plus 0 times x plus 0. That means you can give any value to x, whether you give 5, 6, 7. It is
satisfied by infinitely many values of x. So actually what we say is identically equal to 0. Or you can see here, if a equal to fifth number, if the equation is satisfied by more than two values, if it happens, it holds both ways. That there are three values of x which satisfies a quadratic equation. That means a, b, and c are all 0. What are a, b, c called? They're called the coefficients, and we generally take a to be the coefficient of x square, b to be the coefficient of x, and c the constant term. Now, if you put x equal to 1, so what will you have? A plus b plus c is 0. So this is point number 6. If a plus b plus c is 0, then x equal to 1 has to be a root. If a plus b plus c is 0, x equal to 1 is going to be a root. If a minus b plus c is 0, then x equal to minus 1 is a root. Then if d is greater than 0, then both roots are real and distinct. This is what I mentioned just now. If the discriminant, d is the discriminant. If d is equal to 0, then both roots are real and equal. If d is less than 0, then both roots are complex. And just move it a bit more, please. Now, if d is greater than 0, number 11, that is the roots are real, then the sign of the roots is determined by the coefficients. By the coefficients, we will know what sign the roots are, whether they are positive or negative or what else we can say. So, if your roots are positive, what happens? If you just look at these two relations are very important. If you have alpha plus beta is minus b by a, if the roots are, if a and c are of the same sign, that means what? Alpha beta is greater than 0. Both the roots can be positive or they can be negative. So what we can say is that if both the roots are of the c, a and c are of the same sign, a is the coefficient of x square and c is the constant term. If they are of the same sign, then both the roots will have the same sign. Either both are positive or both are negative. But if you have that both roots are positive, both alpha beta are positive, then what about alpha plus beta? This will also be positive. That means here b by a should be negative because there is a negative sign here. That means a and b should be opposite in sign. So a and c are of the same sign, but a and b are opposite in sign. So this is what we have written, point number 1 in 11. If a and c are of the same sign and b is of the opposite sign, then the roots are positive. Then number 2, if you have that the roots are negative, if you have that the roots are negative, c by a will be positive. That means a and c will be of the same sign. But what about alpha plus beta? Alpha plus beta will be less than 0 because both the roots are negative. So what does this give us? Here there is already a negative sign. So this means a and b should be of the same sign. So you have that a, b and c should be of the same sign. For alpha plus beta to be negative, this term b by a should be positive. And this is possible when the sign of a and b is the same. And sign of a and c also is the same. So what does that mean? That a, b and c are of the same sign. Point number 2 here. Right? Now, if the roots are negative, if the product of the roots are negative, if one root is positive, the other root is negative, what happens to alpha beta? This is going to be less than 0. If one root is positive, the other root is negative,
then the product of the roots will be less than 0, and that will give us that C by A is less than 0. That means A and C are of opposite sign. We cannot say anything about A and B. They may be of the same, alpha plus beta may be positive or it may be negative. B may be positive or negative. For example, if you consider the roots as 1 and minus 2. So what is the equation? X minus 1. What is the sum of the roots? Sum of the roots is minus 1 and product of the roots is minus 2. Product is negative, but the sum is positive. Sum is also negative, right? Now, if we change the roots to same roots I am taking, I have just changed the sign. 2 and minus 1. The sum of the roots becomes 1, but the product is again. So the product can be positive or negative. Product is negative, but the sum can be positive or negative, right? Is that clear? Now, if we look at the equation which tells us the roots, if b square minus 4ac is a perfect square, that means it is either 16 or 121. That means what if, say, b square minus 4ac is k square? So what do the roots become? Of course, we are assuming that it is. So this becomes minus b plus minus k over 2a. Right? What are these? A, B, C are real numbers. And so you will have that the roots are rational numbers. If D is a perfect square, then both the roots are rational. Is that okay? If D is not a perfect square, say I get minus B, of course we are assuming that D is greater than 0. I get here, say, root 3 over 2a. Then the roots are irrational. Okay. Is that clear? So if you get your discriminant is a perfect square, then the roots are going to be rational. And of course, 0 is included in the perfect square. That means if D is greater than or equal to 0. And if D is not a perfect square, then the roots are irrational. Now, a very important result, and I'm going to prove this question as well. If the coefficients are odd, then the equation, it stands for the equation. It cannot have a rational root. If you have ax square plus bx plus c equal to 0. If the coefficients are integers and they are odd integers, then the equation cannot have a rational. Page 5, question number 1, please. Prove that a quadratic equation with odd coefficients cannot have a rational root. You should know this. When I say odd coefficient, that means integers which are odd. Okay. So will you just try to prove it? We have to prove that it does not have a rational root. So one way of proving in mathematics is you assume the contrary. Assume the opposite of what you have to prove. Right? So this is called proof by contradiction. We use it a lot in mathematics. Proof by contradiction. And then you will arrive at some absurd result, which you know is not true. It can be that 0 is equal to 1 or something which contradicts the hypothesis. Here also we'll just use this method of proof. So what will we assume? That suppose it has a rational root. And it's a root of this equation. We'll put the values in here and just see whether it is
true or not. So let us assume. Of course, we are assuming that all the steps that we are doing are logically correct. There are two possibilities. When you arrive at a wrong thing, there might be some flaw in the logic in between. If there is no flaw in the logic, that means what? Our assumption is wrong. So this is what we are going to do. Let one have a rational root P by Q. Then what will you get? A times P by Q whole square plus B times P by Q plus C equal to 0. Take the LCM. You can remove this page. I think first, second. Is that okay? Now, what are the possibilities on P and Q? Co-prime we are taking. That means you have reduced this rational number to the lowest terms. You know what are co-prime numbers? Two numbers which do not have any factor in common except one. That is, they are called co-prime numbers. Is that okay? So, if it was 2 by 4, 2 by 4 we can write it as 1 by 2. So, we are taking PQ to be co-prime in the lowest terms. Now, what are the possibilities on P and Q? Both are odd. One is odd, the other is even. And can both be even? No, because P and Q are co-prime. So just take these possibilities. How many possibilities will there be? 2. Let's see. 1. Odd. I can write odd as O. For odd, I will write O, and for even, I will write E. So P is odd and Q is odd. And I'll write here what is my expression. I will just find out what this expression is going to be. Whether it is going to be odd or even. P is odd, Q is odd. Any other possibility? P is odd, Q is even. And the third one, P is even, Q is odd. And even cannot be there. So if you like, you can mention that both cannot be even because P and Q are co-prime. So just see what is the type of this expression. Is it odd or even? That is all that we can come to know. You know the results about odd and even? Odd into odd is? Odd into odd. Odd. 3 into 5. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, प्रूफ नहीं है. हम जस्ट चेक कर रहे हैं. 3 into 5 15 आएगा. Odd. Proof ऐसे होगा. 2n plus 1 into 2k plus 1. Any odd number is of this form. If you multiply, you will always get 2 times something plus 1. So it will be odd. Odd into odd is odd. Odd into even, even. These are just the two results. See, if you multiply this, it is obviously even. And even into even is also even. But we don't need that here. So P is odd, Q is odd. AP square will be odd. P square is odd. Right? And ABC are what? ABC are all odd. That is already which is given. BPQ, product of 3 odd numbers. Odd, CQ square, odd.
odd, B, P, Q. Q is even. So here you will get even, and this also is even. Even plus even is even, and odd plus even is odd. So this will be odd. Now when P is odd and Q is even, P is odd, P is even. So here you will get even plus odd. So this is also odd. So in all the cases, the left hand side is odd, right hand side is even. It cannot be equal to 0. So our assumption is wrong, and therefore it does not have a rational root. This is what we had assumed, that this equation has a rational root. It's a very important result which you will use in questions. Why I have proved it is that it's not so obvious. So I don't want you to learn, you don't have to learn things by heart without understanding, but the formulae and results, you need to remember them so as to be able to use them, right? So if the coefficients are odd, then the equation cannot have a rational root. Next page, please. Next page. Now, some results about how the roots occur when the coefficients are of certain type. This is also very useful. And these results are more general, like they hold for cubic equation of fourth degree and so on, for any polynomial equation. But we are restricting ourselves to quadratic equations only. This result number 15, it doesn't hold just for second degree equations, quadratic equations. In fact, it holds for all polynomials, right? So let us see. If a equation, if the coefficients are real, then complex roots occur in conjugate pairs. If it has one complex root, then it will have another one. If P plus IQ is a root, P minus IQ is also a root. And why have I mentioned that Q is non-zero? If you have P plus IQ and you take Q to be 0, if Q is 0, what does this become? It just becomes P, so it becomes real. So when I say it's a complex root, in general, it means the coefficient of I has to be non-zero. Just see here that what is the condition on the coefficients? They have to be real. You might say that if you take, you can see here x square minus, if you just consider, I'll write, see, a very simple way to write an equation is just assume the roots to be something. So what is this equation? X square minus I plus 1 times x minus plus I is 0. You might say here that when you solve, the roots are 1 and I. They are not. According to the result, the root should have been, if I is a root, minus I is also a root. But it's not the case here. Why is that so? When you find, what is this coefficient? Is it a real number? The coefficients are not real. So the condition there is that if the coefficients are real numbers, then complex roots will occur in conjugate pairs. Is that okay? A very important result. Now, next one is, if the coefficients are rational numbers, then irrational roots will occur in pairs. That means if P plus root Q, where Q is not a perfect square. What does this mean, that Q is not a perfect square? You cannot write it as square of some number. तो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा. जैसे 3 है, 2 plus root 3. 3 is not a perfect square. But if you write 2 plus root 4, this actually simplifies to this under the under root, it is a perfect square. So if you have an equation with rational coefficients, then irrational roots occur in pairs. That means if P plus root Q is a root, P minus root Q is also a root. What do the coefficients have to be? They have to be rational numbers.
Is that okay? This is also a very important result. I'm not proving it because the proof is not in your course. If you are interested in any algebra book, you can look up the proof. Then next result is if the coefficients are integers. If you have an equation where the coefficients are integers, A, B, C are integers. If it has a rational root P by Q, I'm not saying that it will have a rational root. I'm saying if it has a rational root P by Q, then P should divide the constant term and Q should divide the coefficient of the highest power. In this case, it is x square, the highest power, so it should divide A. So if it has a rational root, then the numerator should divide the constant term and the denominator should divide the coefficient of the highest power. It's not necessary that it will have, if you just look at this equation, x square plus 1 equal to 0. This is an equation with integral coefficients, but it doesn't have any rational root. Is that okay? This is a very powerful result. If I put here, you can't write this as, then this result cannot be applied because coefficients are no longer rational, integers. They have become rational numbers. So what does this result really say? This result really says, if you say, consider this equation, x square plus 5x plus 6 equal to 0. If it has a rational root, if it has a rational root P by Q, then P should divide 6 and Q should divide 1. A is 1. So that means P should divide 6. What are the divisors of 6? 2 and 3? What about minus 2? Minus 2 also minus. And what about 1? Plus minus 1. So, and 6. So the only possible roots, rational roots, if at all there are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. And a set of rational numbers is infinite. और हमने कितने में reduce कर दिया? 8 numbers check करने. If none of them is a 0, this means it does not have any rational root. And I have taken another simple thing. इसका मैंने 1 ले लिया. Supposing I take 2. Then what happens? If there is a rational root, then P divides 2 and Q divides 6. What are the divides? This is a symbol for divides. This means P divides this. Right? Over nahi hai, vertical line hai. Sorry, it's the other way around. Divisors of Q of 6 are these. What are the divisors of 2? Plus minus 1, plus minus 2. So what are the possibilities? The possibilities are plus minus 1 over plus minus 1. Then plus minus 2 over plus minus 1. Plus minus 3 over plus minus 1. And plus minus 6 over plus minus 1. Then plus minus 1 over plus minus 2. Plus minus 1. 2 over plus minus 2. Plus minus 3 over plus minus 2. And plus minus 6 over plus minus 2. These are the only possible rational roots. And you can see some of them will be repeated. So this just means plus minus 1. This also means plus minus 1 and so on. In a quadratic equation, this is not a very useful result because we know the roots. Simple formula hai. But if you have a polynomial equation of higher degree,
Say if you have a fifth degree equation, then, and it has integral coefficients, you will know that what are the possible rational roots. That these rational numbers are the only possible rational roots. यहाँ इतना ज़्यादा useful नहीं है. We know the roots actually, simple formula है हमारे पास. ठीक है? Okay. Now another thing that you saw was this. So what happens if your equation is of this form? X squared plus bx plus c equal to 0. That means b and c are integers. If it has a rational root, it will be integral. Any rational root will be an integer and it will divide the constant term. यहाँ पे ये next point लिखा है. If the equation, इसको जरा सा correct कर लेना, upload हो गया था इसलिए I could not correct it. If the equation has a rational root, point number 4 को modify कर दो. If it has a rational root, it must be a integer. What have we done? We have taken a to be 1. Ax square, a को 1 ले लिया. So if it has a rational root, it must be a integer and it must be a divisor of c. Very powerful result. This result is correct, पर और powerful मैंने बता दिया, वो लिख सकते हो. अगर integral root है तो वो तो c को divide करेगा ही. That's okay. But if it has a rational root, it has to be a integer and it must be a divisor of c. And this you can just verify. Simple calculation say that if the roots are in the ratio of m is to n, then this result holds. You can take the roots to be mk and nk, find the value of k and substitute. So result ये आ जाएगा. AC into m plus n whole square is mn into b square. If you remember the result, at times in questions, you will have more speed. Result याद नहीं है, तो time ज़्यादा लगेगा. And as I told you, competitions are nothing but speed, accuracy, time. You have to have speed, but not at the cost of accuracy. Speed with accuracy. Okay. Then let us, we've done a lot of results. You might be bored also. Let us take up some questions. Application of this result. Can we have questions page 1? Page 1 of the question, that is page 5. Page 5. Question number 1 we have done. Let us take up question number 2. If C and D are the roots of this equation, then find the roots of this equation. You forget about the answer, you just solve it. Now, C and D are the roots of this equation. Write down the equation. What is the equation? X square minus A plus B into X plus AB minus K equal to 0. C and D are the roots of this equation. What does that mean? Sum of the roots is minus B by A. By minus B by A means coefficient of X over coefficient of X square with a negative sign. And product of the roots is constant term over coefficient of X square. So just write down what is C plus D. Then C plus D is A plus B. Minus and minus, so you'll get a plus. And CD is AB minus K. The required equation whose roots have to be found out is X square minus C plus D into X plus CD plus K equal to 0. This is the equation whose roots have to be found out. I'm not writing everything because you have to also have the practice of solving the question without writing it in detail, writing the important things. So this is the equation whose roots have to be found out. So what is this? Minus C plus D is minus A. C plus D is A plus B from here.
And what is CD plus K? It is AB. And the roots of this are A and B. This factorizes as x minus A into x minus B equal to 0. So the roots are nothing but A and B. Simple application of the formulae. Sum of the roots and product of the roots. Okay, now let us take up. We can do question number 3 only. This one. This happens with a lot of us कि हम कुछ गलत उतार लेते हैं. आंसर भी आ जाता है अच्छा सा. पर अगर आंसर नहीं पता तो गलत होता है. So this is what it says. In a quadratic equation with leading coefficient 1, which is the leading coefficient? Coefficient of x square is also called the leading coefficient. In a quadratic equation with leading coefficient 1, a student reads 16 of the coefficient 16 of x wrongly as 19 and gets the roots as 15 and minus 4. So what does this mean? Coefficient of x is 16 plus 16. And what is the product of the roots? He gets the roots as 15 and minus 4. Minus 60. We are not saying that he has read that incorrectly. The only thing which he has read incorrectly is the coefficient of x. So this is your equation. And can you factorize it? I think answer उसमें गलत लिखा है. x. ये minus इसके साथ है, sorry. This is a minus sign here. So it is minus 15 and minus 4. उधर चला गया है. So it is plus 60. The roots are minus 15 and minus 4. Not 15 and minus 4. Right? So this is x plus 10. You know how to factorize it like this? सीधा या पहले 16 को लिखते हो 10x या ऐसे करते हो? And then you take out common. अभी तक ऐसे करते हो क्या? ऐसे करते हो? इसको फैक्टराइज करना है तो you do it like this. It's very lengthy. It won't work if you have to do any competition. What do you have to do? If I have this equation, see, the product is this and the sum is 16. यहाँ दो brackets लगाओ. यहाँ सीधा सीधा values डालो. x square है तो xx ही आएगा. You have to factorize. जो आपने वैसे किया है ना, सीधा लिखना है, वो terms नहीं लिखनी. 60 such that the sum of the factors is 16. ठीक है? तो 60 के कितने 15 और 4 भी बनते हैं फैक्टर्स. हाँ, 10 और 6 पर सम नहीं है 16. तो 10 और 6 है, एक जगह 10 लिखा, एक जगह 6 लिखा. या प्लस साइन आना है तो either both are positive or both are negative. If you put both negative, यहाँ माइनस आना चाहिए, पर यहाँ प्लस है. तो एक स्टेप में you must practice this, that you must write the factors in just one step. You know, each minute you save in your exam, it's a bonus. So you have to learn to do the calculations fast. 12th का जो एग्जाम होता है ना CBSE का, बहुत कूल होता है. आपका 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए. If you are really preparing for IIT, speed. पर वहां एक बात है ना, you have to write in detail. But not for this. You can write this straight away. ठीक है? अगर हमारा ये 19 होता इसी के फैक्टर्स, अगर ये 19 होता, again we would put 2 brackets and
x and x, 15 and 4 आएगा, प्लस आएगा, ठीक है. Now if you want this, if I have तब क्या फैक्टर्स आएंगे, कैसे फैक्टराइज करोगे शॉर्ट में. 60 का फैक्टर्स जो बनेगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज व्हाट आई डू. माइनस को प्लस बनाना बहुत आसान है, इसलिए आई जस्ट राइट माइनस. You have a plus sign, so the bigger factor should have a positive sign. Now you can check 15 minus 4, 11 हो गया. This is 0. So this is what the factors of x square plus 11x minus 60 equal to 0 are in one step. Is that okay? Now if I have minus 11 here, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 15 into x plus 4. 50 क्वेश्चंस उठा के ऐसे फैक्टराइज ऐसे करना. It will take you some time now. You might feel it's very easy to write the formula minus b plus minus. नहीं, यहाँ फैक्टराइज हो रहा है, वहाँ फैक्टराइज करो, it will be much faster. Is that okay? And if of course there is a coefficient here, तो उसका भी adjust कर लेते. If I have a coefficient say here, then what am I going to do? Either I will write 3 into 1 or 1 into 3. And then adjust the factors here so that this into this plus this into this should give you the middle term. Is that okay? So just try to do the factorization. You are doing the same thing. It's not that you are doing anything different, but you are not writing all the steps. वो steps 8th में खत्म हो जाने चाहिए थे, पर अगर नहीं हुए हैं तो you must start doing that. Okay. Now let us take this next question. See question number 4. We have done 1, 2, 3. Let us take question number 4. If alpha and beta are the roots of this equation, and alpha plus k and beta plus k are the roots of this equation, then prove that b square minus 4ac over a square is equal to capital B square minus capital 4ac over a square. Right? So just try it. Write the relation between the roots and the coefficients. What do you have? Alpha plus beta is minus b by a, and alpha beta is c by a. Alpha plus k plus beta plus k is minus b by a, and alpha plus k into beta plus k is c by a. This is small c and that is capital C. One way is you just calculate these values and simplify. That is what we are going to do, but we are going to do it b square minus 4ac over a square. This we are going to write it as b square by a square minus 4ac by a. And what is b square by a square? This is, if you want, I'm just writing all the steps, but there is really no need. And b by a whole square is
minus b by a whole square. So it is alpha plus beta whole square. And this is 4 times alpha beta. And what is this? Alpha minus beta. Algebra की formulae fingertips पे होने चाहिए. Otherwise you won't be able to see through. अगर भूल गए हो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो. And I think personally the best way to revise is एक formula copy बना लो. जो जो फॉर्मूले याद नहीं है उसमें सब लिखते जाओ टॉपिक वाइज, सारे लिख ही लो. एंड रीड इट लाइक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड गीता. कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ते, पेरेंट्स पढ़ते होंगे. गीता में क्या करते हैं हम, या कोई भी रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ हम अपना पढ़ते हैं, बाइबल, 1 पेज रोज तो पढ़ते ही है ना, या 5 मिनट पढ़ते हैं. तो ये आपकी फॉर्मूला कॉपी आपकी गीता होगी 2 साल के लिए. 1 पन्ना रोज फॉर्मूलों का पढ़ लो, या 5 मिनट 10 मिनट whatever, without fail. So if you write all the formulae, you will find they are all on your fingertips. Trigonometry के इतने सारे फॉर्मूले हैं जो याद नहीं रहते कभी. You will remember them. Maybe you will finish that reading that notebook of yours in 1 month. तो 1 साल में 12 बार रिवाइज हो जाएगा, right? So this is what we have got is b square minus 4ac over b a square is what? Alpha minus beta whole square. अब दोबारा से ये कैलकुलेट करेंगे क्या? कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac over a square. Do we need to calculate it again? नहीं, तो ये क्या होगा? This is going to be, what is this? 1 root minus the other root whole square. So here 1 root is alpha plus k minus beta plus k whole square. So this is also alpha minus beta whole square. So both of them are equal. Simple. बहुत difficult लग रहा था देखने में तो, but when you do it, it becomes very simple. Any doubt? Now let us take up the next question. Question number 5. What does it say? If alpha and beta are the roots of this equation, ax square plus 2bx plus c equal to 0. The roots are alpha and beta. And gamma and delta are the roots of px square plus 2qx plus r equal to 0. And the numbers alpha, beta, gamma, delta are in GP. We have to prove something, a relationship between the coefficients of the 2 equations. Is that okay? If you want, you can write it here quickly. Alpha plus beta is minus 2b by a, and alpha beta is c by a. Gamma plus delta is minus 2q by p, and gamma delta is r by p. Side में इसीलिए लिख ले space भी बचाने के लिए, because you have only objective type questions. So you just need to do the calculations fast. Then the other condition is that alpha, beta, gamma, delta are in GP. You know what does it mean? What does it mean? There is a common ratio. That means beta by alpha is the same as gamma by beta is the same as delta by gamma. Another condition is that product of 2 roots, when we do biquadratic equations, product of 2 of the numbers, agar ye le, alpha delta is beta gamma. Beta by alpha is delta by gamma. So you get alpha delta
is equal to beta gamma. Product of the extremes is equal to product of the means. If you just look at this relationship here, एक side ABC है और दूसरी side PQR. ABC alpha beta से आएगा. So I will take this one. I won't take this one. We don't have any relationship between beta and gamma. Beta is the root of the first equation. Gamma is the root of this equation. उनके बीच में हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ये वाली कंडीशन. Since alpha beta gamma delta are in GP, alpha beta gamma delta are in GP, therefore beta by alpha is delta by gamma. Or you can even write alpha by beta is gamma by delta. It's the same thing. You know what is componendo and dividendo? Okay, so that is what we are going to apply. अगर नहीं पता तो I can just quickly tell you, but if you know it, it's fine. That's also a very important tool which we use in simplification. So you will have alpha plus beta over alpha minus beta is gamma plus delta over gamma minus. Applying C and D बोलते हैं इसको short में, componendo and dividendo. Just apply that. Is that okay? What is alpha plus beta? Is minus b by 2b by a. अल्फा माइनस बीटा नहीं पता हमें, कैसे निकालेंगे? अल्फा बीटा चाहिए हमें अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए, नहीं, कैसे निकालेंगे? यहां भी आ गया -2q बाय r बाय p. डिनोमिनेटर्स नहीं पता है. Can anyone tell me? See, actually, I didn't tell you on purpose. I thought when we come across it, when we need it, we'll do it. We can, if we can express alpha minus beta in terms of alpha plus beta and alpha beta, then it will be simple. So what formula do we have? Alpha minus beta whole square is equal to right. तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट नहीं चाहिए हमें तो क्या करें, यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये नहीं करना. इसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. दिस इज गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर ओवर. स्ट्रेट अवे तुम्हें सोल्यूशन दिखा देते तो पता नहीं लगता, कई बार नहीं आ रहा, अंडर रूट आएगा. वी वांट टू अवॉइड द स्क्वायर रूट साइड, so we can square, it doesn't make any difference, right? So what is this? You can write it as alpha plus beta whole square over alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta is equal to gamma plus delta whole square over gamma plus delta whole square minus 4 gamma delta. अब वैल्यूज डाल दो वहां से और होपफुली आ जाना चाहिए, है ना. एबीसी की टर्म्स में आएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पी क्यू आर. जस्ट सिंप्लीफाई. आई गिव यू 2 minutes. Class 5 class. So what do you get? 4b square by a square over 4b square by a square minus 4c by a is equal. And you know ये सिमिलर है दोनों साइड को, चाहे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. एक साइड को कर लेंगे, a will be replaced by q, b by
A by P, B by Q, C by R, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस हैं, पर अगर करना है तो यहाँ पे कर लो 4q स्क्वायर बाय p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4q स्क्वायर by p square minus 4 times r by p. Just simplify. Are you getting the result? What are you getting after this? 4 will cancel out. You get b square over b square minus 4ac is equal to q square over q square minus 4pr. What do you do after this? ये तो नहीं प्रूव करना ना हमें, 4 नहीं आएगा, सॉरी, थैंक यू, वो तो डिफरेंट है. अब क्या करना है? You said you've got it. या तो फिर सिर्फ कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर लो या इसका रेसिप्रोकल ले लो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे बहुत टाइम लगेगा. You can do that way also. Now you will get 1 minus AC by B square is equal to 1 minus PR by Q square. PR. Right? और यही था हमारा. ठीक है ना? 5th question. 1 cancel हो जाएगा. AC by B square is equal to PR by Q square. Is that okay? Now we'll move to question number 12 first. Question number 12. अभी तक हम बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है. If alpha beta are the roots of x square minus x plus b equal to 0 and sk is equal to alpha to the k plus beta to the k, then we have to show that S2, S3 and S5 are in GP. Now before this, doing this question, I'll just tell you something about symmetric functions. Symmetric functions in alpha and beta. If you just see, we know alpha plus beta and we know alpha beta. We have found out alpha minus beta by what formula? You can also find out alpha cube plus beta cube if you can express alpha cube plus beta cube in terms of alpha plus beta and alpha beta, alpha 4 plus beta 4, and so on. Now first we'll define what is a symmetric function. I think page 2 or 3. We say that a rational expression, page 2, questions nahi, beginning mein. ये तो पेज 5 है ना, बिगिनिंग का पेज 2. पेज 3, पेज 3 और नीचे, और नीचे. Now what is a symmetric function? Let me first define symmetric function. और थोड़ा नीचे कर ताकि ये portion आ जाए. हाँ. What is symmetric function of the roots? If we have an expression which remains the same when you interchange alpha and beta, we say it is a symmetric expression. So for instance, if you have say alpha square plus beta square, if you interchange alpha and beta, what does this become? Beta square plus alpha square, which is the same as alpha square plus beta square. But if I have 2 alpha square plus beta square, if I interchange alpha and beta, what do I get? 2 beta square plus alpha. Is this the same as the top one? No. So this is not a symmetric expression in alpha and beta. So if we have symmetric expression, symmetric functions of the roots, that means expressions which are symmetric in alpha and beta,
then we can find the value of these in terms of the coefficients. We can express them in terms of alpha plus beta and alpha beta. And alpha plus beta and alpha beta we are expressing in terms of A, B and C, the coefficients of the equation. So these are the relations, the identities हैं आपकी algebra की, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं ज़्यादा डिटेल में. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा. Alpha cube plus beta cube is alpha plus beta whole cube minus 3 times alpha beta. Then alpha 4 plus beta 4. If we have to find out, you will first find out alpha cube plus beta cube from number 2. And then you will get the value of alpha 4 plus beta 4. And so on. Alpha square minus beta square. This is alpha plus beta into alpha minus beta. And so on. These are some of the expressions which I have written. These are just our normal identities, but you must know them. So in this question, is this clear? Normal formulae hai, but you are trying to express everything in terms of, yeah, I've shown you the breakup also. Alpha in 7th, alpha 4 plus beta 4, you factorize it as alpha square plus beta square into alpha square minus beta square, and alpha square minus beta square, you write it as alpha plus beta into alpha minus beta. Alpha square plus beta square you can get from 1, and alpha minus beta also you will get it. That I have not written here, you can write here this expression also. Alpha minus beta whole square is alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. So alpha minus beta you will get whole square and then take the under root. So it just depends what we need. Another way of doing it is, if we are saying our equation is ax square plus bx, ये tedious है ज़्यादा. Alpha beta are its roots. So a alpha square plus b alpha plus c is 0, and a beta square plus b beta plus c is 0. Add 1 and 2. What will you get? 1 plus 2 will give us a times alpha square plus beta square plus b times alpha plus beta plus 2c is 0. So you can get the values of alpha square plus beta square because you know alpha plus beta in terms of a, b and c. This is minus b by 2a. Or you can use that formula, that will be simpler. Is that okay? If we want alpha cube plus beta cube, either apply that formula, number 2, or what you can say, multiply this equation by x. So what will you get? Ax cube plus bx square plus cx equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation. So you will get a alpha cube plus b alpha square plus c alpha is 0, and b alpha cube, a alpha cube. अब इनको add कर लो. So you will get a times alpha cube plus beta cube plus b times alpha square plus beta square plus c times two नहीं आएगा, c आएगा. You will have to find the value of alpha square plus beta square. Then you will get the value of alpha cube plus beta cube. Now you can do the way you like. ये बहुत tedious हो जाता है if we do it this way. Using those formula, you will find it to be simpler. The only thing is you have to remember those formulae. So what does this say? Question number 12, page 5 पर. If alpha beta are the roots of x square minus, question number 12, yes, x square minus x plus b equal to 0. So let us write the roots. X is 1 plus minus b square plus 4b under the root over 2.
This is what it is. So this is 1 plus 4b under the root over 2 and 1 minus 1 plus 4b under the root over 2. This is alpha and beta से. प्लस वाले को अल्फा कह दिया है जिसमें अंडर रूट से पहले प्लस साइन है और दूसरे वाले को बीटा. So what do we have to find out? We have to prove that S2, S3 and S5 are in GP. What is S2? S2 is alpha square plus beta square. S5 is, S3 is alpha cube plus beta cube, and S5 is alpha 5 plus beta 5. So as I told you just now, you can apply that method. That alpha beta are the roots of this. Roots निकालने की जगह वो सारा कर सकते हैं, जैसे अभी दिखाया था. अल्फा 5 प्लस बीटा 5 निकालना है. 5th डिग्री बनानी है तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑन द वे x टू द 4 भी निकलेगा. अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी, एंड सो ऑन. That is one way. They are in GP. That is what we have to prove. But I'm going to use a different method. Sorry, ये GP नहीं है, word AP है. I'm really sorry. ये typing error है. They are in AP prove करना है. This is AP. They are in AP. Not GP, but AP. That means we have to prove that 2 times S3 is S2 plus S5. This is what we have to prove. Question number 12 में GP की जगह AP हमें prove करना. So what I'm going to do is I'm just going to solve this. Let us denote SK by alpha to the K plus beta to the K. Alpha to the power K plus beta to the power K. Right? And now what is your alpha to the power K? 1 plus 4b under the root over 2 whole to the power K plus 1 minus 1 plus 4b under root by 2 whole to the power K. 2 to the power K, 1 over 2 to the power K common आ जाएगा. 1 over 2 to the power K, and this will be 1 plus 4b to the power half whole to the power K plus 1 minus 1 plus 4b to the power half whole to the power K. This is of the form 1 plus x to the power K plus 1 minus x to the power K. तो odd वाली terms cancel हो जाएंगी. Isn't it? यहाँ पे जब हम binomial theorem यहाँ लगाएंगे, binomial will expand it. 1 plus x. So this is 1 plus kc1 into 1 plus 4b to the power half plus kc2 into 1 plus 4b plus kc3 into 1 plus 4b to the power 3 by 2 plus I'll write up to 4 terms and spending a bit of time. Otherwise इसको जब अच्छे से फॉर्मूले आते होंगे तो वैसे ही कर लूंगी. Plus this will be 1 minus kc1, 1 plus 1 plus 4b to the power half. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस. प्लस, can I rub this off so that I write the other terms? Plus kc2 into 1 plus 4b minus kc3 into 1 plus 4b to the power 3 by 2 plus kc4 into 1 plus 4b whole square.
So the second term will, और बाहर इसके पूरे के बाहर 1/2 to the power k नहीं छोड़ना. Is that okay? So what this will become, बाकी सब टर्म्स 2 टाइम्स होंगी, उस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, या यहाँ पे 2 के साथ लिख देती हूँ. 2 plus 2 times Kc2 plus 2 times Kc4 so this will become 1/2 to the power k minus 1 into 1 plus, what is Kc2? NCR पता है नहीं? हाँ, तो बस n की जगह k है, k factorial over 2 factorial into k minus. So what will it become? This is what it is, right? So what we'll do is 1 plus, अभी इसे simplify नहीं करते, because what do we need? S5 वगैरह चाहिए. What is this? पूरा general नहीं लिखते अभी ना, otherwise it will become very complicated. This you have to realize कि कब कैसे लिखना है. ये SK है, I am not putting the value of K. What do I need? I need S2, S3 and S5. वो लिखेंगे. सीधा SK general नहीं लिख. I don't need it. Right? We can write it, but since I don't need it, I'm not going to write it. So what is S2? Therefore, S2 is equal to 2 to the power 2 minus 1. So 1 into 1 plus 2C2 into 1 plus 4B. आगे की terms आएंगी ही नहीं. You can't have 2C4. So what is this? 1/2. And what is 2C2? 1. So 1 plus 4B, which is 1 plus 2B. Right? Now write down what is S3. S3 is 1/2 square into 1 plus 3C2 into 1 plus 4B. 3C4, will we get 3C4? 3C4 आएगा? ये हमने शुरू से, nobody pointed it out, I wanted to see. Roots 1 minus, so why didn't you say? ये सारे roots 1 plus नहीं है, 1 minus है. तो basically यहाँ सब जगह और कोई चेंज नहीं आएगा प्लस की, उसके बाहर का कोफिशिएंट तो माइनस ही है. ठीक है, तो ये सारे माइनस हैं. यू मस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये हमारी इक्वेशन ये होगी. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 1 minus 2B. ठीक है, ये आएगा हमारी इक्वेशन. ये 1 प्लस नहीं है, ये 1 माइनस है. सो दिस इज व्हाट? 1/4 into 1 plus, what is 3C2? 3 into 1 minus 4B, which is, I'll just rub this off. And what does this turn out to be? 1/4, 4 cancel हो जाएगा, so you'll get 1 minus 3B. 3 plus 1 4, और यहाँ इस वाले 4 से, so you'll just get 1 minus 4B. 3B. Now find out S5. What is S5? S5 is equal to 1/2 to the power 4 into 1 plus 5C2 into 1 minus 4B plus 5C4
into 1 minus 4b whole square. What would be the next term? KC6. है ना? So 5C6 वो होगी नहीं, so we don't need it. We can't have, when you have KCR, your K has to be greater than equal to R. So you can't have 5C6. So if you just simplify S5, this is what you will get. Just simplify it. And the value that you will get is S5 is 1 minus 5b plus 5b square. You can do the calculations at home I want to do, and you can check that 2s3. Check that 2s3 is S2 plus S5. That means S2, S3 and S5 are in. This is what you have to get. Since S2, S3 and S5, what was the question? Find B. So let us see. When we put this, what do we get? Since S2, S3 and S5 are in AP, since S2, S3, S5 are in AP, therefore 2S3 is equal to S2 plus S5, and this will imply, just put the values, and what you will get is 5b square minus b. When you simplify, is 0. And what does this give you? B equal to 1 by 5. ठीक है? क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आने चाहिए, b equal to 1 by 5 or 0. Don't forget the 0. This you will write as b into 5b minus 1 is 0, and this will give you मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ना ये, तो उसमें एक ऑप्शन होगा 0, एक ऑप्शन होगा 1 by 5, एक ऑप्शन होगा 1 by 5 and 0, और एक कहीं एरर करके या none of these. So you might, if you forget this, you'll mark this option, but the correct option is this, right? Okay. Now let us take up. I'll just go through 7th question. 7th question is, if you just see the ratio of these roots is the same. 5th question ऊपर देखो, सिमिलर है ना, वहां 2b था, यहाँ b है, वहां क्या कहा है? GP है, यहाँ बोला है ratio of the roots of these two equations are the same. Same equation है, ratio is the same. This means alpha by beta is gamma by delta. तो वहां से वो 2 से फर्क नहीं पड़ेगा. You will see in the calculations, it won't make any difference. ठीक है? Okay. Then let us take up question number 6. What does it say? If this has distinct roots, what does it mean that it has 6 distinct roots? That determinant is greater than 0. So just see that the determinant is greater than 0. And you will get the condition. You will get a square is, you will get something like a square minus 2 is greater than 0. कुछ ऐसे आ जाएगा. So from there you will get it. Which is this question? Question number 6. Right? So you just calculate. नहीं, इसमें एक trick है. Question number 6. You know the factors of x4 plus x square plus 1. Does anybody know the factors of this? You can write it like this. This is question number 6. And this is x square plus 1 minus x into x square plus 1 plus x.
6th-7th की मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये वाला, वहां चाहे बच्चे को आता है नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके यू राइट इट लाइक दिस एंड देन यू फैक्टराइज, राइट. Where is question number 6? So what is the trick here is that when you see this, what is the discriminant? Now what is x square? So this equation you will get x square plus x plus 1. This is x plus 1 by 2 whole square plus 3 by 4. X square plus x plus 1, we can write it as, so from the given equation you will just have square complete किया है. This is called, I hope you know this, completing the square. क्या करते हैं इन दोनों terms, quadratic equation के roots भी वैसे ही आते हैं. We are going to do it tomorrow जब trace करेंगे. इन दोनों को ऐसे adjust कर लें, square complete हो जाए, ठीक है, और फिर वो term adjust कर देते हैं. So our equation is a minus 1 into x square plus x plus 1 whole square minus a plus 1 into x4 plus x square plus 1. इसको फैक्टराइज कर लिया और x square plus x plus 1 कॉमन ले लिया into a minus 1 into x square plus x plus 1 minus a plus 1 into x square minus x plus 1. This is equal to 0. Now this is always positive. This is, we'll write it like this. This is greater than 0 for all x. So from here we can say that this is nothing but a minus 1 into x square plus x plus 1 minus a plus 1 into x square minus x plus 1 is equal to 0. And when you rewrite this equation, you simplify it, you will get x square minus ax plus 1 equal to 0. Is this clear? इसको simplify करोगे ये आएगा. अब इसका, the roots are real and distinct if the discriminant is greater than 0. So you will get d greater than 0, which implies a square is greater than 4 आ जाएगा. So mod a is greater than 2. Okay, I'll quickly, I'd like to do a few more questions. So 7th तक हमने कर लिया है. Let us look at question number 8. What is question number 8? Alpha, beta are the roots of this equation. And we have two values of m1, m2 which satisfy this. And alpha, beta are connected by this. Again, यहाँ पे होना चाहिए alpha by beta plus beta by alpha. Alpha by beta plus beta by alpha here. This term. This is beta by alpha. So what we are going to do is, we'll just simplify this. Alpha by beta plus beta by alpha is 4 by 3. What does this give you? Alpha square plus beta square over alpha beta is 4 by 3. And from the first equation which is given, we can write the relation between the alpha, beta are the roots of that equation. So from there, we will write what is alpha plus beta is, actually you will rewrite the equation as m square x square minus x into 2m minus m square plus 3 equal to 0.
right? So you have alpha plus beta is 2m minus m square over m square, and this is 1 minus 2 by m, and alpha beta is 3 by m square. Just substitute the values here. This will be alpha plus beta whole square minus 4 times minus 2 times alpha beta. This is what is your alpha square plus beta square, right? So when you simplify, you will get this equation, m square minus 4m plus 6 equal to 0. और ये m की टर्म्स में सिंप्लीफाई किया तो वहां वैल्यूज डाल के आ जाएगा. Is that okay? Now let us take up question number 9. 9 also is a very good question. Question number 9 says, I'll just discuss, we have less time and you can try on your own. The sides of a scalene triangle. Scalene triangle means ABC are different. Rather than saying ABC are different, they've just said, these are the sides of a scalene triangle and K is a real number. If the roots of this equation are real, find the value of K. What does it mean that the roots are real? Discriminant is greater than 0. So when you find the discriminant, what you will get is, इसमें भी एक थोड़ी सी trick है. I'll just tell you the trick. When you write the discriminant, the value which you will get is K is less than equal to A square plus B square plus C square over 3 times AB plus BC plus CA plus 2 by 3. D greater than equal to 0. This will give you this when you simplify. Is that okay? Now, because it is a triangle, what properties do you know about triangles? Any triangle, sum of 2 sides is greater than the third. But you also have another, that the difference of 2 sides is less than the third. So A minus B whole square is less than C square. B minus C whole square is less than A square. And C minus A whole square is less than B square. You add all three and you will get that A square plus B square plus C square over 3 times AB plus BC plus CA is less than 2 आ जाएगा. यहाँ अप्लाई कर दो. Is that clear? ये property triangle की use करनी है. That's why they are given that they are the sides and it's distinct कहीं non-zero के लिए. Is that okay? So you'll get the answer is already given there. Now, this is question number 9 after that. Question number 9. What does this say? This 10 now. This was question number 9. Find K such that the equations x square minus x minus 12, a common root का भी नहीं मैंने कराया. Let us move to the next one. Question number 24. Let us see. Simple question. Question number 24. Find the condition on P such that the roots of this equation are real and positive. सबसे पहले किया था ना? Real discriminant is greater than 0 and positive. Positive कब होंगे? A and B are of the same sign and A and C are of the same sign and B is of different sign. So P minus 3 वहां से पहले से एक कंडीशन आएगी
तो वहां से p पॉजिटिव आता है, so p minus 3 and 5p, so p has to be greater than, first of all a is non-zero, so p minus 3 has to be greater than 0. So you have that p is greater than 3. ये first condition. दूसरी वहां से आएगी, that the discriminant is greater than 0. Just try it. And I have put this question at the end. Just I want to tell you, exam में भी जरूरी नहीं है कि order से ही चलना है. कभी किसी question पे अटक गए, बाद वाले simpler हो सकते हैं. It's not necessary कि बाद वाले difficult ही होंगे. That you have to use your own judgment. Slowly you will realize. Then let us look at question number 28. थोड़ा सा और scroll कर दो. ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने किया था in copying. I'm sure you can do it yourself. Some of the roots भी आ जाएगा, product भी आ जाएगा. Then after 28, question number 10. Let us go to question number 10. I think question number 10 वो repeated roots का है, तो वो अभी नहीं कर रहे, common roots का. 17. Question number 17. Next page पर है. This is also a very interesting question. You are given these two equations. Alpha, beta are the roots of the first one and gamma, delta are roots of the second one. And you have to find the value of alpha minus gamma into beta minus gamma, alpha minus gamma into beta minus gamma, into alpha plus delta into beta plus delta. थोड़ी सी इसमें ट्रिक है बस. Alpha, beta are the roots of this equation. So x square plus px plus 1 is equal to x minus alpha into x minus beta. If you just see here, alpha beta के साथ gamma है और फिर alpha beta के साथ एक तरीके से delta है. तो put x equal to alpha, gamma and minus delta in this equation. तो क्या आएगा? Gamma square plus p gamma plus 1 is equal to gamma minus alpha into gamma minus beta. और delta square minus p है, a है, p है, ठीक है. p delta plus 1 is equal to delta minus alpha, delta plus minus delta minus alpha. Delta रखा, minus delta रखा है ना, into minus delta minus beta. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. गामा स्क्वायर प्लस 1 क्या है? गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. x square plus qx plus 1 equal to 0. So you have gamma square. You have gamma square plus q gamma plus 1 is 0 and delta square plus q delta plus 1 is 0. यहाँ पे सब substitute कर दो. Is that okay? Use this here and then multiply. You'll get the answer. तो देखने में बहुत भयानक लगता है ये 17th क्वेश्चन. मल्टीप्लाई करोगे, what you might attempt to do is कि सारों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर करो, आसानी से नहीं आएगा. Okay, then let us take up, this is question number 17, 22 or 23. Last page पे. This here, I just want to tell you one thing. Wherever you have modulus questions, you consider two cases. Mod x, x is positive. ये question number 22. 22, yes. So take x is greater than 0. You will get the equation as x square plus x minus 6 is 0. उसके roots निकालिए. And when you have x is less than 0, then you have x square minus x minus 6 is 0. You have to find the sum of the
रियल रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, दिस यू विल फैक्टराइज इट एज, जैसे मैंने बताया था 6 चाहिए ना, 3 और 2 का सम आ जाता है, +1 चाहिए तो +3 -2। तो इससे क्या वैल्यूज आ रही हैं, x is -3 and 2. I am rejecting x equal to -3. Why? mod x नहीं, हमारा केस ये है, x is greater than 0, so this is not permissible. तो x is 2. यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा x, जैसे मैंने कहा इसमें 3 और 2 लिख लो, नेगेटिव चाहिए तो इसके साथ नेगेटिव होगा, उसके साथ पॉजिटिव। सो x is -2 and 3। तो यहां से रूट सिर्फ 2 आ रहा है, यहां से x has to be negative, so we will reject 3, so the root is -2. So the sum of the roots is 2 plus -2, which is 0. Is that okay? In the other question also 23 mod of x -2 को t रख के क्वाड्रेटिक आ जाएगी t में। Just try it. mod of x -2 को वैसे रियल रूट्स फिर निकालने हैं और फिर 2 केसेस आ जाएंगे। ये इक्वेशन होगी t² प्लस t -2, t की वैल्यूज आएंगी और उसके बाद केस होंगे, राइट? थैंक यू। यहाँ पे वो वाला डस्टर नहीं है जो, हाँ पिछली बार वही था ना, इसलिए मैंने इसको चिपका दिया।